So, hi guys, I am Parampreet Singh, and as you all know, I have been taking Python and MLP sessions from a long time. I have like good amount of experience in programming and especially in Python. Um, yes. Uh, so, uh, First of all, I would like to thank GIR House and Kanha House for collaborating with me for these Python sessions. So we will be conducting like two sessions. First is today. Okay, first OPP 2 revision session is today. Today we will cover up all the concepts from week 1 to week 8, and we will see some problem solving techniques and how to approach the problem. Okay, uh, and then in tomorrow's session, in the next session, which is tomorrow around 12 p.m. Okay, we will do a lot of practice questions. We will do all the OPP 2 mock questions and some new practice questions as well. And I will give you like a very detailed overview of all the like most of the questions, that how to approach, how to find the solution, and how to write the code and everything. So uh, both of these sessions will be like around should be around 2 hours. Maximum we will extend it to 2.5 hours if depending upon the doubts we have. Okay, so let's start. And just one thing, I am recording this session and I will upload the recording of this session in my YouTube channel. So this is my YouTube channel. You can subscribe to it. Okay, just search Parampreet Singh or Param3021. You will get my YouTube channel, and I will upload the recording at around after this session, after 1 hour of this, after we end. It will take like around 1 hour and I will upload it. And just one thing, be interactive throughout the session. Okay, मेरे सामने कोड की स्क्रीन होगी, so I won't be able to see like most of the times I won't be able to see the comments or thumbs up. So it would be very beneficial for me as well as for you if you can interact in between. And अगर किसी को कोई doubt होगा, first we will cover up the concepts. Okay, आफ्टर क्लियरिंग वन कंसेप्ट, अगर किसी को कोई डाउट आता है वाइल कवरिंग अ कंसेप्ट, सो जस्ट बियर विथ मी फॉर दैट मच टाइम. आफ्टर जब हम कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे वो वाला, तब आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेना. ओके, you can raise your hands, you can ask your doubts in comment in the chat as well. Okay, uh, how to code in PyTutor and some. Yes, I will share the tips, OPP tips and everything in tomorrow's session. Okay, today we will cover up all the concepts mainly from the very first week till week 10. All right, so let's start. Okay, so first of all, like let me list all the topics which we have. So string, int, float, and these are some data types, right? Then we have list, tuple, dictionary, and these are some data structures and functions. And then file handling. In file handling we have like text, yes, sets as well. So in functions like normal functions and lambda functions as well. Okay, um, these are the main things. And yeah, this is pretty much it, right? From week 1 to week 10, this is all, these are all the topics if I'm not wrong. Also the comprehension, list, set, dictionary, these comprehensions, right? Am I missing something, any topic? If you guys feel अगर मैं कोई topic skip कर रहा हूँ, you can remind me and I will cover that as well. Okay, so all right, so let's start. First of all, basic string. Okay, let's start with the basic int and float. So integer and float. Okay, apart from that, we have some built-in functions. Okay, modules. I think modules basic, so you know like how to import and how to work. Okay, these are some extra things. Yes, built-in functions, zip, map, filter, and split, everything we are covering. Okay,
So first let's start with int and float. So int and float are like some basic data types, like int and like to define any number, we simply write the number. We don't need any kind of quotation marks and anything. So this will be considered as an integer. And then if I define some float, let's say pi, or some e, or any kind of number, or let's say some any random float. So this is how I can define any float as well. And yeah, if we see like print n pi x, and I will also print the type of them. Okay, type of pi and type of x. Also, okay, just this. If I run this, so here you can see I have printed all these three numbers and their respective data type. So 23 is int, so it is showing class int, and this is pi is float, hence it is showing float, and similar for x. Okay, now just one thing. What is this? What is the type of y? Is it int or float? All right, it is float. Yes, that is like 0.01 if I print it as well. So this is just a shorthand trick to write the decimal numbers. And okay, what about okay, ये तो हो ही जाएगा. Yeah, so what about this? Is this int or is this float? All right, it is also float because we have 3 point. 3 point simply indicates 0 is not necessary. Okay, so बस इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि डॉट लग गया, देयर इज अ डॉट, सो will it be int or float. जहाँ भी डॉट लग रहा है that number is a float. Okay, just a very basic thing. बाकी operations, so you all know, like the different operators, and the power, the remainder, modulo, and etc. Okay, so we are not going into that. Next is string. So in string, we can define a string in either quotation marks or like in any way, like in double quotation marks or in single quotation marks, as well as in triple quotes as well. That is a multi-line string. So if I write here param, okay, in single quotation marks. Also, if I write like something like this, hi, my name is param. So this is also a string. And similarly for one more, if I write something like this, hi, my name. Okay, that's it. Okay, so these all four are strings. Okay, in some में कोई difference नहीं है. If I print the type of them, type of n, type of sentence, and type of send to. Also, if I, yeah, okay, just okay, let's just consider the type. Oh, I'll tell you just in a moment. Okay, so these are all our strings. We can prove, we can see by their types as well. Okay, what about these two things, like जो यहाँ पे, like I have. No, you have given comma after hi. Is it like the comma indicates the next line or the space? That what I wanted to ask you all. Uh, okay, so this comma is indicating a new line or not? Uh, how many No, of you? No, No, this No, comma doesn't no, new indicate line means slash n. operators. right. no, no. And if I like print this as it is, like send or sentence, sentence 2, so ये new line भी print होगी या new line will be stripped out and this complete string will be printed in a single line? As it is print होगा या फिर एक ही line में print होगा? Since it is a string, एक ही line में print होगा. Okay, as it is, As it is. because As it it is a is over multi-line sir. string. Okay, Multi-line. if I run it, you can see hi, my name is Param, hi, and my name.
Comma is just a character. Okay, it is not any kind of a separator. This is So because of the triple quotes. comma, right? Yes. So these triple quotes are like multi-line strings. And if we like, there are like there is many various use cases of this multi-line string. If we define we use this multi-line strings as a doc string for the functions and classes to basically write their documentation. So अगर कभी भी आपने कोई मॉड्यूल वगैरह देखा होगा तो there you must have found like लिखा होता है बहुत कुछ in the multi-line string. If I even check for random, maybe in the random module, yeah, so here you can see this ट्रिपल कोड तो account के लिए भी यूज करते हैं ना? sorry, can you सर वो repeat? ट्रिपल कोड तो कमेंट्स के लिए यूज करते हैं. किसके लिए? नो, नॉट फॉर कमेंट्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट कि ट्रिपल कोट्स आर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स that we use as a comments as well. Okay, multi line comments, but that is a valid string also. Okay, so कोई डिफरेंस नहीं है. Yes, I will go into file handling as well, don't worry. So जैसा like I have opened the random.py जो random module है python का, तो यहाँ पे भी you can see this one. So ये जो starting पे जो पूरा होता है ना, this is a multi-line string, and the multi-line string is like it is being interpreted as a doc string, okay, of this module. सो सेम थिंग जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये पूरा, इफ आई होवर इट हेयर तो यू कैन सी यहाँ पे जो पूरा लिखा आ रहा है सेम थिंग इज बीइंग रिटन हेयर. सो दिस इज हाउ डॉक स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड. हम इसको मल्टी लाइन कमेंट्स भी कह सकते हैं, डॉक स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी कह सकते हैं. मेनली दीज आर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स. Yes, I am So recording this. basically, this multi-line string is comment only, na? No. These are strings. We use them as a comments or doc strings. Okay. Okay, okay. This is just up to So our what's use the case. difference that hash wala comment and this one? No difference. Hash is an actual comment. Okay. It is an actual comment. If I even try to print it something like this, you can see I'm not able to print it. Like it is saying this is not closed. Okay. But if I try to print this multi-line string, something like this, if I have defined here, like hi, my name is Param. Okay, so this is a multi-line string. I am able to print it because it is a valid string. Okay, we treat it as a comment, multi-line comment, but it is actually a string. Okay, we are not able to print hi. If I run this, you can see I'm getting error for this line, line number 24. If I remove this line, the next line we are able to print it out. This one. Okay, so if we don't add print in front of that multi-line string, then it will be regarded as comment only. Yes, it will be considered as a comment only. Um, okay, just a second, guys. Sorry for the interruption. All right, I'm back. So yes, uh, it's up to our use case. हम किस purpose के लिए we are using it. Okay, तो उसी base पे we use it like हम इसको string consider करेंगे, हम इसको doc string consider करेंगे, and same for the multi-line comments as well. Okay, now बहुत बेसिक्स सा था ये. एंड आफ्टर दैट वी हैव द स्लाइसिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट न्यूमरस टाइम्स. just basic, I'm doing it. First is indexing is like to get a specific character. Indexing can be done in, okay, we have name not s, so indexing can be done in the normal positive integers and the negative integers as well, which is called negative indexing, right? So this will give me the p, and this minus one will give me t. Okay, so this is just normal indexing. Okay, yeah, here. So p and t. Now what if like I want this p but using minus negative indexing? How can I get? So anybody?
Which p? The first p? Yes, I want the first p, but using minus negative indexing. Minus of 10. I think name Yes, minus of 10. by manually it is minus of 10. Uh, okay, len of name minus 1. All right. So yeah, just one thing. If I like do something like this, len of name, and let's say okay, थोड़ा सा complex हो रहा है. What I will do is I'll store the length in n. Okay, len of name. Now what I will do is अगर मैं लिखता हूँ n, so will it work? Or if it works, what value it will give? Okay, yes, of course it won't work It's out because of range. indexes are like 0 to n minus 1, right? Basic सा concept है. If I write minus n, now what value, like will it work or not? If it works, then कौन सी value आएगी मेरे पास? Yes, p आएगा. Because it 10 n is the 10 and same it is like minus 10 we are writing here. Okay, ये दोनों same है, just we are writing in different ways. Okay, so बहुत ही basics है. If I like try to like write it here, let me visualize it. So we have like, okay, the font is okay, so P A R A M. I'm just like considering a 5 length of string. Okay, consider ये मेरी एक string है जो मैंने एक name के variable में मैंने store करी है. ठीक है, परम इसकी length जो है 5 है. Okay, so let me like divide each character in a block. So इससे we will get a better understanding. I'm just like clearing the concept of indexing and slicing. So positive indexing जो होती है that is start from 0. So 0 1 2 3 4 and it goes up to n minus 1 and we consider as a length. Okay, which is also the length of name. All right. Then negative indexing starts from like minus 1 and goes up to minus n. Okay, so minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5. So this is like what positive indexing is and this is what negative indexing is. Okay, so बहुत basic सी चीज़ थी. I hope इससे सबको clear हो गया होगा. Okay, and now like during the indexing slicing, now comes the concept of slicing. If I want like only these things like ARA, okay, if I use red, so if I want only these 3 characters, how can I get them? Like what should be my code if I write param here only? How can I get ARA from this name? Anybody? Yeah, 1 to 4 and 1 to minus 1. Okay, so we will try both the ways, negative and positive indexing. So the first one is like 1 to okay, isn't it like 1 to 3? 1 to 3 नहीं होना चाहिए? No. Okay, why? Because it is at last it will take n minus 1. Yeah, okay, so during the slicing, just a basic thing, in slicing we write something like this. This is the syntax. First is start, then the colon, then the stop, and then step. Okay, so whatever it will result till stop minus 1. Okay, so जो end है like it will only include till stop minus 1. It won't include that last stop index as. Okay, so same in the same manner range function also works. Okay, Like that, it doesn't include the ending index position, right? right, it does not include this ending index. Or if I even write
and that would be much better. So and okay, so it won't include and, it will only give me the string till and -1. Okay, same in the same manner a range function also works. Okay, so 1 2 3 will give me AR. Okay, if I want ARA, I should use 1 to 4. Okay, now what about negative indexing? If I want ARA but using negative slicing, how can I get so? So here are the indexes. आप इसको देख के भी you can tell me. -4 to -1. All right. -4 to -1. Okay, so I'm getting one more. -2 to -1. Okay, -4. So if I run this, yes, again I'm getting this, and the same thing. Now just one more thing. See, whenever we do the slicing ना, first priority step को मिलती है. Okay, अगर हमारा step positive में, by default step is 1. Okay, so it means step is positive, so हम increment करेंगे start से end पे. अगर step हमारा negative में है ना, some negative value, some negative x or something, देन हमारा जो है स्टार्ट में नेगेटिव माइनस होता जाएगा, देन आवर स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन एंड. सो बेसिक सी चीज़ है, लाइक on the basis of step you should consider the value of start and end. Okay, so like if I print my whole name, something like this. Okay, so this is also valid slicing. It means like मैं पूरे string के through iterate कर रहा हूँ. Okay, or the same thing like if I want ARAM, I don't want P, then मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, right? Either I can write in this way, name of 1 till and -1, or 1 till end, right? Both are valid ways. If I run this, I'll get okay, sorry, not end, yeah, end. So both are valid. ARAM, okay, दोनों में कोई difference नहीं है. That is by default it like based on the step, like जो हम अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे स्टेप पे या स्टार्ट पे, तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक द डिफॉल्ट वैल्यूज. पॉजिटिव इंडेक्स है तो इट विल टेक द लास्ट वैल्यू विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, and same for the start as well. Like if I go in more deep, okay, so all right, this is my string, right? Param. So if I want only these characters ARAM, then अगर मैं ऐसे वन सिर्फ इतना लिखता हूँ, वन से लेकर 1 कोलन एंड नथिंग, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टॉप है ना, दैट एंड पैरामीटर, इट विल कंसिडर एज n. ओके, एंड इफ आई वांट की like if I want only these three PAR, then I have two ways. Either I can write something like this 0 to 3. Okay, or I can write in the similar way, which is column 3. Okay, both are same way. मैं यहाँ पे start की कोई value provide नहीं कर रहा, so it is taking default value which is 0. Okay, okay, Manish Gupta, can you stop sharing your screen? All right. um um okay, yeah, so this is it. Yeah, okay, now this is like the basic indexing and all, slicing, and now the reverse negative slicing. I won't go in much deep, just a basic, like if I want the name in reverse using negative slicing, how can I get? So -1, yes, colon colon -1. Well, ये सबको याद रहता है, but the logic is like very basic. Like I am writing colon colon -1.
तो इट मीन्स मेरा स्टेप जो है -1 है, नेगेटिव है, तो और मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड की वैल्यू कोई प्रोवाइड नहीं करी. ओके, सो इट विल ऑटोमेटिकली टेक द वैल्यूज, दैट इज यहाँ पे इट विल टेक माइनस, ओके नॉट 10, सॉरी, -5 here, and यहाँ पे it will take 0, okay, in the value of end. So we can do in both the ways, either this or in fact this as well, -5 0. Okay, sorry, yeah, from -5 -4 okay, that is, if I go from this 1 -5, yeah, if I run this I'm yeah, okay, I don't have to include it, okay, sorry for the confusion, yeah, -1 to 0, -1, I yes, think that in is the similar. starting index position it would be -6 and No, see, -6 क्यों नहीं, क्योंकि we have the index of -1, so -6 plus -1, that would be -7, right? हमें इसके बाद हमें यहाँ से इंक्रीमेंट करना है, वी आर इंक्रीमेंटिंग, वी आर नॉट डिक्रीमेंटिंग. अगर मैं ऐसे लिखूँ, नेम ऑफ -6 till 0, then it will give me the like name in the actual manner if I like pass in the index as well, and sorry, pass in the step value, then मेरे पास जो है I'll get the name in the name actual which I have. Okay, so that is different. Mainly जो है मैं यही करना चाह रहा था कि it रिवर्स will का क्या लॉजिक. print in the reverse manner, I think, no? Yes, I'm just printing the name in reverse manner, so we can do in either ways. Okay, rest, rest is all practice. आप जैसे जैसे practice करोगे आपको visible होता रहेगा clear. Okay, maximize, I should maximize the screen. Okay, now let's move on to the list and tuple. So list we can define via square brackets. Okay, list can contain any data types as the elements. उसमें कुछ ऐसा नहीं कि we need only similar data types. Now for the tuple, tuple में हम same data types रख सकते हैं या फिर नहीं? Yes, we can store single data type, but Yes, we can but store. but the comma we have to implement. I think the comma should be there. Yeah, okay, if I even take this, so both are valid. Okay, this is a list, this is a tuple. So in tuple, curly brace, sorry, these round brackets are not important, the comma is important. Okay, अगर मैं सेम एक और tuple define करता हूँ 1, 2, param and 3.14, both are tuples. Okay, if I print t and print t2 and the type of them as well, you will see like दोनों जो है both are considered as tuple. Okay, so these parentheses are just to cover the whole data. Okay, and similarly, okay, can we create an empty tuple? Okay, how? Yes, if we take comma inside a bracket, then we can say it's an empty tuple. All right, this is how. Yes, I think. I'm Okay, not sure, but I think. okay, if I run this, yes, I'll get an error. Okay, ये भी चलेगा. All right, so comma is not valid. Like empty tuple we cannot define normally. If I like run this, like someone said, just round brackets also works. If I run it, you can see मेरे पास ये सिर्फ parentheses आ रहे हैं. And if I run this, yeah, that would be a tuple, right? This is a valid tuple. Also, like one more, we can call the tuple class as well. Okay, this will also give us an empty tuple. What about one element tuple? Like, is this a tuple or is this an integer?
This is a tuple. All right. Tuple. This is a tuple because of the comma. All right. And this is a one element tuple. So So by default, it anything will take tuple only. um means I mean, if you like here, you have taken two comma na. mm-hmm. मैं कुछ भी So लिख सकता हूँ. If I write like if I normally write this, okay, is this a string or is without this a giving tuple? that braces, Yes. that uh, also we will take as tuple only. right. So only just a comma will change the whole data type. Okay. So without comma it is a string. If I write comma, then it will be a tuple. Doesn't matter I write square these braces or not. Okay. Comma is important. Now if I write this, now is this a tuple or string? Okay. How many of you are saying it is a tuple? Okay. I'm getting different answers. Tuple string, tuple string. This is a string. Okay. Because parentheses are not necessary. So this is a string क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कॉमा नहीं डाला. कॉमा is important. Just इसका ध्यान रखना. ठीक है. Don't get confused while defining tuples and all. Well, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें you have to define a tuple explicitly. List ही we mostly define. Just that tuple is more efficient because we cannot modify the tuple. Tuple is immutable, right? हम tuple में कुछ ऐड नहीं कर सकते, कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. We cannot do any modifications in the tuple. Okay, so this is it. Just We cannot basics. add an element to the tuple. Right, we cannot. So if I simply create a 3 element tuple and if I try to see like मेरे पास यहाँ पे कोई function भी नहीं है. I only have two functions, count or index. Okay, so these are just for reading the data and all. I don't have any kind of append or insert function, just like in list we have. Okay, if I even try to do something like this, normal, if I do append and print t, I'll get an error that tuple has no attribute append. Okay, कोई append नाम का, we don't have any kind of attribute or function or something like that. Same as well for insert as well. Same for insert. Okay, and we don't have the remove and pop as well. If we discuss this thing now, t plus equals to, okay, yeah. So see, t equals if I write something like this, t equals t plus 4 comma 5. Okay, this will be a valid tuple. Okay, this is not like हम इस t में we are adding. Okay, what we are doing is हम वो ओल्ड टपल ले रहे हैं एंड उस ओल्ड टपल को न्यू टपल के साथ हम ऐड कर रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू टपल. ओके, we are merging like these two tuples. We are not like adding the data or something like that. अगर मैं single भी लूँ, I am not like adding it in the tuple. ये मेरा new create हो रहा है and the same is like ये shorthand है. This is the shorthand technique. Okay, the same is this one. So both are like not merge, not adding the this new data in original tuple. It is simply creating a new tuple. Like agar if I give you show you how it is working. So we have a tuple this, right? 1 2 3 okay, 1 2 3. So this is my tuple t. All right, what I am doing is I am adding one more tuple which is 4 comma 5. तो इस पे जो है ये नहीं हो रहा कि लाइक टी के अंदर ही मेरा जो है 1 2 3 4 5 हो रहा है. ओके, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज 1 2 एंड 3 जो है इसके साथ साथ लाइक 4 और 5 को मैं मर्ज कर रहा हूँ जब, तो मेरा एक न्यू टपल बन रहा है. ओके, and this can be done in both ways, either like this or like this, t plus equals 4 comma 5. okay, इन दोनों पे we are like doing the same operation. okay, कोई difference नहीं है.
So make sure you won't get confused कि हम tuple में कुछ add नहीं कर सकते. We are not adding something in the tuple. In tomorrow's session, as I said, we will do the OPPE questions, more questions and some new questions. Today we are like clearing the concepts and all. And slicing and indexing we can do in the list and tuple. If you want to go in deeper, like if you want to clear your concepts in deeper, you can watch my session on list, tuples and dictionary. Okay, this is the playlist which I have, and here on this one, the session 9 and session 10, you can watch both these sessions to clear your concept, like the complete understanding, like the methods which we have and the other things like how remove is working, how pop, insert and other methods are working. Okay, of list and hence for tuple and as well. Okay, now these are some basic things. Promotion, you can say promotion, but it is like for your beneficial, so I don't think कि इसमें कोई दिक्कत है. Yeah, so next, dictionary. Dictionary is just a key value pair. Like if I simply create, okay, is this a dictionary or a set? Set. Okay, okay, I'm getting different answer. It is a dictionary. Okay, it is not a set. यहाँ पे we can see as well. So to create an empty set, what we do is we can only call this set class. Okay, then only we can create an empty set. All right, so make sure कि आप इस पे confuse ना हो. जब भी आपके पास ऐसे curly braces हो, empty curly braces, this is a dictionary. Okay, doesn't matter बीच में कितनी space है या कुछ भी है. Okay, now what about this? Is this a dictionary or set? You guys can write it in the chat. Set. Yes, this is a set, of course. इसमें कोई confusion नहीं. Why? Because see, in dictionary we have key value pairs. Like if and each. Okay, let me write some as well first. See, something like this. Okay, so this is a dictionary on line number 22. Okay, the next one is a set. How can we differentiate them? Like इस पे we can see this particular thing is a one element and that is a pair. Okay, in this pair we have a key before the colon, and after the colon we have the value. Okay, value of that respective key. So this is a dictionary, this is a set. Just a basic difference. In dictionary we store the pairs. How to split two strings, and I'll show you just after this. Okay, so this is a simple difference between the dictionary and set. And in dictionary we don't have like the indexes just like we have in string or list or tuple. In dictionary we have the custom indexes which are these keys. Okay, अगर मैं print d of 0 करता हूँ, what will be my answer? 1. Okay, I'm writing various options. Okay, आप मुझे बताना. Second one. Okay, and d also error. So what is the what will be the answer? A, B, C, D. You can write anything. D. Error. Yes, जी. जब तक मैंने error नहीं लिखा था, I'm getting different answers. See, in dictionary we have the custom indexes. Okay, and this is the like 0 is being considered as a key. तो मेरे पास इस डिक्शनरी में कोई 0 नाम की की है ही नहीं, कोई ऐसा की वैल्यू पेयर है ही नहीं जिसमें 0 करके कोई की हो. Okay, so that's why I'm getting this error. Now if I write 1, now what will be my output? A, B, C, D. Yes, my output will D. be B. Okay, 1.
So I can access the value from the key like this. Okay. And similarly, we can create new pairs as well. If I write something like this, 4, okay, this will create a new pair, and hence I will have the value of dictionary, d dictionary like this. Okay. And now what about, So for indexing, we have to write the exact name of the key. That's all. sorry, For for indexing in dictionary, we have to write the exact value exact of key, the key. Okay. exact key. Okay, आपको पूरी की लिखनी If it पड़ेगी. is there in a string, then we have to write that string. Yes, मैं आपको different variations भी बताऊंगा. Okay, now tell me the what will be the value of 1, this key, uh, like what will I get if I print d of 1, param or 1? Yes, latest value is param, so that's why I'll get param. Okay. मेरी जो है डिक्शनरी मॉडिफाई हो गई है, लाइक 1 की वैल्यू मेरी अपडेट हो गई. ओके, इवन इफ आई प्रिंट इट हियर यू विल सी द डिफरेंस. लाइक पहले मेरे पास ये थे डिक्शनरी, जब मैंने परम सेट किया यहाँ पे इन लाइन नंबर 26, आई एम गेटिंग दिस डिक्शनरी. ऑल राइट, so this is very basic. And now in dictionary, like we can have immutable, we can have immutable keys. Okay, immutable keys means like one the strings, floats, integers, the numbers and the strings as well as the tuples, these are immutable. Okay, so um, we can keep them as like the keys. Okay, value मेरी कुछ भी हो सकती है. If I like try something like this, 1 2 3 tuple, and now this 1 2 3 list. So will I get any error? Yeah, is this a valid dictionary? Okay, valid, no error. All right, I'm getting different answers. See, this is not a valid dictionary. Why? Because I'll get an error here, unhashable type list. And there comes the concept of hashable and unhashable. Similarly, you can interpret this as like जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको हम की में नहीं रख सकते. लिस्ट को वी कैन मॉडिफाई, राइट, टपल को वी कांट मॉडिफाई. Same I have proved earlier, so that's why I can keep it as this. And if I run this, you can see it is a valid. Okay, is this valid or will I get any error? Yes, this is a valid. Okay, क्योंकि मेरी जो की है that is a string. Okay, string is immutable. एंड जैसे टपल में भी होता है, स्ट्रिंग में भी होता है. अभी जैसे टपल में समवन हैज आस्क्ड कि हम इन लाइक ऐड नहीं कर सकते. सो इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, breathe. Okay, this is similar to what like this. Okay, line number 30 and line number 31 are same things. Okay, so there is no difference, same way how tuple works. Okay, so confused mat hona, just I'm just clearing the what are like the basic understanding of each data structure. So this is it. And now one last thing, can we have a set as a key? यहाँ पे अभी मैं गया नहीं, but let's see. No. Yes, we cannot have, because set we can modify the set. Okay, in set we have the add, remove functions. By that way we can modify. So same I'm getting here. And now what about this last one? Oh, can I have a dictionary as a key? All right, I'm getting, yeah, valid, yes, of course. I'm getting this answer.
Okay, hashable and hashable. Okay. See, बहुत basic सा difference है. If you like, अगर आप लोगों ने hashing का पढ़ा होगा, like MD5 hash and SH 256 and different hashing techniques. Okay. So इसका क्या मतलब होता है, हर एक चीज़ का ना, whatever text we have, let's say if I have this, I'll get some specific value for this. Okay, a number we can say or something. Okay, let's say 1 2 3 4. So this is hashable. Means अगर मैं इसको change करूँगा तो इसका जो hash है वो भी change हो जाएगा. ठीक है. But list is not hashable in Python mainly. अगर मैं like इसका hash कुछ भी निकालूंगा तो let's say मेरा कोई hash आया x, and अगर मैं इस list को modify करता हूँ तो like we cannot compute the hash of this original list. Okay, so this will be a new list we can say. अगर मैं इसी में ही append करके करूँगा so I won't get the hash. So there is a difference of hashable and unhashable. A equals 97. Yes, we keep dicts and dict. See, okay, yes, I skipped it. So डिक्शनरी को हम नहीं रख सकते अगेन, क्योंकि डिक्शनरी वी कैन मॉडिफाई, राइट. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि like I have changed the key value, the value of a key. So same way we cannot keep the dictionary. So I'm getting unhashable type dictionary. Okay, dict. So we can't keep the dictionary as a key as well. Okay, मुझे बहुत सारे yes answers आए थे. So just that. Now okay, that is it. A basic, like if I create a list like this, okay, 1 2 3 4 5 6. What is the length of this list? इसकी लेंथ क्या होगी? 5 6. All right, 6. No, it is not 6, it is 5. If I run this, you can see 5. How 5? See, these two are two different strings, but यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है. Okay, so ये दोनों strings आपस में concatenate हो रही हैं. Okay, if I print the list as well, yes, you can see जो 4 5 है, it is being considered as a one string. Okay, अगर मैं ऐसे भी कर दूं, न्यू लाइन पे भी ले आऊं, still also it will concatenate. Okay, there is no difference. Same I can prove here as well. परमप्रीत. ओके, तो ये मेरा एस टपल हुआ या फिर इट इज अ स्ट्रिंग? राइट, इट इज अ स्ट्रिंग. एंड जो स्ट्रिंग है वो परमप्रीत ऐसे पूरी कंबाइन हो गई. ओके, डजंट मैटर हाउ मेनी स्पेसेस आई विल हैव. ओके, व्हाट अबाउट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस? नाउ, is it a string, is it a list, is it a tuple? Tuple. Yes, tuple. Okay, बहुत बेसिक है. सी, ये ट्रिक क्वेश्चन ऐसे आपको एंड टर्म में आ सकते हैं मे बी, बट द पॉइंट ऑफ दिस इज स्पेशली दिस लिस्ट, कि आप जब भी ऐसे लिस्ट वगैरह करो, डिफाइन करो, स्पेशली स्ट्रिंग्स की लिस्ट, चपल, कुछ भी, तो मेक श्योर आप कॉमा अच्छे से डाल रहे हो, क्योंकि कभी कभी आपको आ सकता है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी एरर आ सकता है. लाइक आप 5 इंडेक्स नहीं डाल पाओगे ना, you will have at most 4 index, right, and इसकी लेंथ भी 5 होगी. so you might see कि मेरी लिस्ट की लेंथ कैसे कम आ रही है. तो मेक श्योर कि आप ऐसे छोटे मोटे टाइपोज नहीं कर रहे. ओके, that may lead to different answers. All right, just one more question. Okay, what will be the answer? What value
I'll get if I run this code. 6. Okay. Basic question है, just I'm trying to make it complex. Okay, just divide it into parts. First is this one. Okay, अंदर मैंने एक और डिक्शनरी डाली हुई है जिसमें मैं 2 की वैल्यू ले रहा हूँ. ओके, द वैल्यू ऑफ दिस 2 की इज 3. ओके, तो ये मेरा 3 जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है. दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. नाउ d of 3 is 6. Okay, same if I do here d of 1. Now what will I get? अब मैंने 3 levels की indexing कर ली kind of. Again I'll get 6, right? So बहुत ही basic चीज़ थी. I am just doing this one basically क्योंकि I have seen a lot of you guys have difficulty in dictionary, right? And similarly I have prepared various data as well in different data structures जिससे आपको पूरा clear हो जाएगा. Okay. Now this is it regarding the comprehensions. See, comprehensions are just like creating the list in a different manner. Okay, let's say मुझे एक events की list बनानी है. Okay, from 1 to 20. Not in fact events, अगर मुझे simply एक numbers की list बनानी है, nums, बहुत basic सा. Normal approach is this, right? Right, it will give me numbers from 1 to 10. For 10, 1 to 11, it will give me the numbers from 1 to 10, right? Same thing I can achieve using list comprehension as well. Just watch this carefully. Okay, बहुत basic है. Define an empty list. Whatever we are, okay, we have the loop here. Okay, इस same loop को I'll copy. Okay, colon को मैं copy नहीं कर रहा, बस loop को copy कर रहा हूँ, and I am writing the loop here, pasting it here. Okay, now before the loop के पहले जो भी चीज़ मुझे append करनी है ना लिस्ट में, वो मैं लिख रहा हूँ. तो मुझे I append करना है, राइट? मैं I append कर रहा हूँ. सेम आई एम राइटिंग हियर I, एंड मैं एक स्पेस डाल देता हूँ जस्ट टू सेपरेट देम. ओके, so both are same. Okay, if I print them nums2, you can see both are same. All right, this is list comprehension, this is normal list creation. Okay, and now let's say मैंने एक simple सा function बनाया है square करके, which takes a number and return its square. Okay, and what I am doing here is s equals sq of I, and I'm appending that s here. All right, then I'm getting all the squares here. Right, मैं वहाँ भी कर सकता हूँ. I'm just like doing for the comprehension. अब मैं comprehension में कैसे करूँगा? How will I do in comprehension? First, so I'll paste the loop. Okay, after the loop, how can I use these two lines here in the comprehension? अगर आपके पास कुछ भी माइंड में है, any guess, you can write it here. Okay, I square square 2. All right, this is valid. But let's say मुझे ये square function use करना है. It is compulsory for me that I have to use the square function. Then yes, sq of I. Okay, and if I run this print nums2, तो मेरा यहाँ पे जो है स्क्वायर आ रहा है. ऑल राइट, सो बहुत ही बेसिक था, जस्ट अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. बाकी फॉर द डिटेल, अगेन in my playlist I have this last one video, Python one liners. This is a talk which I did, so isme I have covered everything about comprehensions, list, string, and yes, you can use map as well. Okay, now again to do the same thing but in a different manner. List, map, sq, and let's say range of 1 to 11. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कोड,
returns list results in list out. No, comprehension depend करता है मैं किस चीज़ का comprehension कर रहा हूँ. We have like 3 different comprehensions: list, set and dictionary. Okay, so this is a list comprehension because I have square brackets. अगर मैं यहाँ पे curly braces डाल दूंगा then I will have a set here. Alright, if I print the type of it, type of nums2, this will be a set. Okay, and मैं डीप में नहीं जा रहा डिक्शनरी में क्योंकि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं लाइक उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, सो आई एम जस्ट लाइक स्किपिंग इट. ऑल राइट, नाउ दिस कोड इज वर्किंग एज इन द सेम वे जो मेरे पहले ऊपर वाले कोड भी काम कर रहे हैं. ओके, कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस कोड ऑन लाइन नंबर 38? Yes. All right. Okay. See, इस पे क्या हो रहा है? If I like simply copy this one and paste it here. All right. Square function applied to the iterable range, map by check, change to list. Yes, this is correct, Vipul. Yes, I am recording this session. ओके, सो सी बहुत बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना. दिस रेंज जनरेट्स बेसिकली, अभी के लिए कंसिडर कर लो, दिस इज गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ लाइक 1 to 10. ओके, इतना क्लियर है सबको? जस्ट दिस वन, दिस पर्टिकुलर रेंज फंक्शन, इज दिस क्लियर गाइस? इफ यू कैन स्पीक दैट वुड बी मच बेटर. Yes. Okay, now see, I have I am calling a function called map, and इस map में I have this square and the range. Okay, मेरे पास दो चीज़ें हैं. Square is a function. मैंने square को यहाँ पे कॉल नहीं करा. Okay, square मैंने कुछ ऐसे डिफाइन करा था, n * 2, राइट. मैंने यहाँ पे स्क्वायर को कॉल नहीं करा, मैंने बस स्क्वायर फंक्शन का नेम लिख दिया. सो व्हाट दिस मैप इज डूइंग, जो मेरे पास ये लिस्ट ये है ना रेंज, ये रेंज पे जितने भी नंबर्स हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 10, इन हर एक नंबर पे ना इट विल टेक दैट नंबर एंड इट विल कॉल दिस फंक्शन ऑन दिस नंबर. ओके, स्क्वायर 1, एंड जो भी स्क्वायर 1 की जो वैल्यू आएगी, रिटर्न वैल्यू, वो इस मैप के अंदर स्टोर होती जाएगी. ओके, समथिंग लाइक दिस 1 4 9 16 25 till 100. All right, and this map basically generates an object. Okay, object पे ज़्यादा deep पे अभी like don't think that much in the object. That is like we cannot visualize it. Okay, हम normally इसको देख नहीं सकते, so we just convert this map into a list. Okay, तो यही चीज़ हो रही है, मुझे यही चीज़ मिल रही है यहाँ से यहाँ पे by writing these line this like by calling these different functions. Okay, this is also called like functional programming approach. Okay, some languages which only follows the functional programming, उसमें हम ये करते हैं. Yes, list of squares from 1 to 10. Okay, now the map तो and आप मैप बता सकते हो? sorry. Map, can you explain what map is? Okay, map basically what map do is okay, sorry for this. Map basically takes a function, okay, and an iterable. Iterable can be anything: a list, a string, a tuple, a dictionary, a set, anything, or even a range. Okay, let's say मैंने यहाँ पे एक list pass कर दी. So what map will do is map will call this function on each and every element of this list. Okay, एंड जो भी जो भी एक एक एलिमेंट पे इस फंक्शन को कॉल करके जो इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी ना, दैट रिटर्न वैल्यू इट विल स्टोर. ऑल राइट, so this is what map do. Okay, now for the detail, like yes, the first parameter should be a function. Yeah, just 2 minutes more.
this is like how map works. Now like for So after it just stores the value of the function. um, not, yes, the value of the returned value. ओके, Yeah, हर एक एक yeah. एलिमेंट पे जो भी उस फंक्शन को कॉल करेगा एंड जो भी वैल्यू आएगी, लाइक ये मैप इज वर्किंग इन द सेम वे दिस इज वर्किंग। ओके, मैं रेंज पे हर एक एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ आई, उसमें मैं ये स्क्वायर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एस क्यू ऑफ आई। ओके, एंड दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द मैप, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे मेरे पास एस में है। ऑल राइट, आइट्रेटर एंड आइट्रेबल। ऑल राइट, see, range, some list, some string or anything like that, tuple हो गया, set हो गया, dictionary, these are iterables। okay, we can iterate on them। iterate on them means we can go from one value to another, we can do like हम एक वैल्यू से दूसरे, हम different elements पे we can like we can say jump or something, हम एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे ऐसे करके we can iterate। okay, so iterables are all these things। okay, now iterator is जब whenever we define a loop, let's say something like this, so this is an iterator I, जो I जो है ये एक वेरिएबल भी है, इट इज एन iterator टू, क्योंकि ये iterator जो है हर एक एक वैल्यू पे जा रहा है, like from the very first value to second, third, fourth, fifth and so on, so this is an iterator। okay, this is the difference between iterator and iterable। all right, so this is it। now इसके अलावा we have various functions, filter, map square function is the iterator। see, map will automatically create the iterator, we only have the iterable here। okay, यहाँ पे कोई iterator नहीं है, it will automatically create the iterator internally and it will iterate on each value। okay, so let's not confuse everybody, just keep it simple। and then map, filter, zip and other functions also we have। okay, reduce and various, so ये सारे functions I have already covered in the previous session, like in OPP1 revision session, this session number 23। okay, you guys can watch it क्योंकि same thing I have already covered it। yeah, enumerate as well। okay, you can watch that, or if you want me to cover I can cover them as well। okay, zip is clear to you all? Zip function, how many of you know about zip function? Just give a thumbs up, if you don't know give a thumbs down। okay, all right, all right, see, I have two lists, मैं लिस्ट में नहीं, मैं डिफरेंट रखता हूँ। ओके, S1 2 3, आई हैव टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। ठीक है, इफ आई वांट टू आइटरेट इन बोथ ऑफ देम एक ही बारी में, ओके, फॉर x in what I can do is I can use a zip function। if I normally run this zip of n, zip के अंदर मैं इन दोनों को पास कर रहा हूँ, n और s को। if I run this I'll get an object। okay, and if I convert this object into a list, ठीक है, what I will get is key value pair, some kind of like this, a pair mainly, a pair। and how this pair is being formed, same indexes पे जो जो elements हैं in all the objects मेरे पास वो सारे आ रहे हैं, like 1 के साथ 1 है तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, and 2 के साथ 2 आ रहा है, similarly for this। now if I have this as well, par only, okay, and I have here p, here now you can see मैंने यहाँ पे p भी पास कर दिया, तो p जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है p मेरे पास आ रहा है। ओके, अगर ये आप लोगों को पता है यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes, इफ नॉट यू कैन बेयर विद मी,
you can like watch this one. Okay, and p मेरे पास आ रहा है, and similarly second पे I have 2 and then a, तो मेरे पास यहाँ पे a आ रहा है, तो मेरे पास ये different pairs बन रहे हैं. Okay, zip is basically combining the pairs in the same indexes. Okay, now let's say I have this param. Okay, अभी मेरी इसकी लेंथ कितनी है? What is the length of this list? उसी पे I am going. Okay, the length is 3. Okay, now here I have this param p variable. इसकी length क्या है p variable की? 5. All right, now will I get an error here? Okay, yeah, I think maybe. Okay, no, getting different answers. See, I won't get any error. What will happen is जो शॉर्टेस्ट जो भी है ना इसमें आइट्रेबल जो भी सबसे छोटा है उसी तक इट विल आइट्रेट. ओके, सो इफ आई रन दिस यू कैन सी मेरे पास आर तक ही आ रहा है. वट इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस? अब तीनों की लेंथ डिफरेंट है, राइट? एन की लेंथ है 2, एस की लेंथ है 3, पी की लेंथ है 5. मेरे पास 2 एलिमेंट्स की ही लिस्ट बनेगी आफ्टर दिस जिप. ओके, क्योंकि आई हैव लाइक बाय डिफॉल्ट दिस इज हाउ जिप वर्क्स. ऑल राइट, नाउ इफ आई व्हाट इज द यूज केस? सी, अगर आपके पास बहुत डिफरेंट डेटा है, लाइक लेट्स से आपके पास एक नेम्स नाम की एक लिस्ट है जिसमें आपके पास पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नेम्स हैं. ओके, आपके पास एक मार्क्स नाम की लिस्ट है जिसके पास आपके उन स्टूडेंट्स के रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं. ठीक है, एंड आपको उनके नेम्स और मार्क्स से डिक्शनरी बनानी है. आपके पास बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं. फर्स्ट वे इज व्हाट यू कैन डू इज like you can like consider, you can assume कि दोनों की लेंथ जो है जो सेम होगी. ठीक है, सो फर्स्ट वे इज दिस. आप ऐसे डिक्शनरी बना सकते हो डी ऑफ नेम्स ऑफ आई इक्वल मार्क्स ऑफ आई. ऑल राइट, दिस इज वन वे. नाउ second way is like this dictionary from, okay, sorry, second way is this for let's say if I do something like this, x in zip of names and marks. okay, तो मेरे पास x के अंदर ना नेम और मार्क्स दोनों आ जाएगा. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेपरेट देम. ओके, n कॉमा n, एंड मेरे पास x पे मार्क्स आ जाएंगे, एंड देन आई कैन क्रिएट डिक्शनरी समथिंग लाइक दिस. ओके, सो जिप का मेनली ये है कि वी कैन कंबाइन दैम एंड हम उस पर एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं. ऑल राइट, हमें डिफरेंट टाइम्स पे ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे. ओके, नाउ वेयर वाज आई? सी, अब यहाँ पे ना मेरे पास 3 डिफरेंट लेंथ्स की ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटरेटर्स हैं. वट इफ आई वांट कि जब भी मैं इनको जिप करूँ ना, अगर इनकी लेंथ कभी भी डिफरेंट होती है, ठीक है, मान लो मैंने कोई एपीआई कॉल करी कहीं से, आई एम टेकिंग द डेटा, आई डोंट नो द एक्चुअल लेंथ, बट आई वांट कि लेंथ सबकी सेम होनी चाहिए. ठीक है, यस, इट विल क्रिएट अ सिंगल आइटरेबल, इट विल कंबाइन देम. ओके, अगर मुझे चाहिए कि सबकी लेंथ जो है सेम हो, अगर सेम नहीं है तो मुझे एरर मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वल्स ट्रू पास कर दूंगा. ओके, इट विल स्ट्रिक्टली चेक अगर लेंथ सेम है या नहीं. अगर लेंथ सेम नहीं है सो इट इज गिविंग मी एन एरर कि आर्ग्यूमेंट 2 की जो लेंथ है वो लॉन्गर है देन आर्ग्यूमेंट 1. मतलब जो मेरा आर्ग्यूमेंट 1 है वो n है ना, एंड आर्ग्यूमेंट 2 जो है वो मेरा s है. तो s की लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, एंड यहीं पे मेरे पास एरर आ गया, p पे गया ही नहीं. ओके, अगर मैं इन दोनों की लेंथ सेम कर दूँ, 1 2 3 कर दूँ, देन मेरे पास वापस से एरर आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट 3 की जो लेंथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 1 and 2. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन वैलिडेट द लेंथ एज वेल. ओके, while zipping various iterables. All right. So yes, then बाकी सारे भी हैं. एक यूजफुल मैं आपको बता देता हूँ, एन्यूमरेट.
लेट्स से आपके पास वेरियस नेम्स हैं, परम, करण, अर्जुन, रमेश, ओके, बहुत सारे नेम्स हैं। बट यू वांट इज आपको ना नेम्स तो प्रिंट करने हैं, आपको नेम्स के साथ साथ एक उनका लाइक नंबर भी प्रिंट करना, लाइक 1 2 3, ओके, आपको सीरियल वाइज नेम प्रिंट करने हैं विद द नंबर एज वेल। डिफॉल्ट वे क्या होगा, एक तो नॉर्मल वे n=1, एंड मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 n, नेम I, right, and I have to increment the n as well, right? तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4, दिस इज द डिफॉल्ट वे, very beginner way, we can say. Now second way is this, for I in range len of names and print n, and okay, sorry, not n, yeah, what I can do here is this, right? ये भी मेरे पास सेम आउटपुट देगा, है ना? बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज जो मेरा इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट आई कैन हैंडल इट, +1 मैं कर सकता हूँ, है ना? इफ आई डू +1, देन मेरे पास सेम आउटपुट आएगा 1 2 3 4, ऑल राइट। नाउ द सेम थिंग आई कैन अचीव लाइक without doing this, without computing the length, without using the range function, I can do the same thing, लाइक इन दोनों, ये जो दो डिफरेंट कोड हैं, मैं दोनों की जगह मैं एक थर्ड वे यूज कर सकता हूँ, विच इज यूजिंग एन्यूमरेट फंक्शन, विच इज दिस, इफ आई सिंपली राइट, ओके, एक्स, मैं अभी एक्स लिखता हूँ, एन्यूमरेट, एंड इन द एन्यूमरेट आई विल पास नेम्स, ओके, जस्ट दैट, नेम्स में पास करूंगा। अब मेरे पास एक्स में क्या है, आई विल हैव अ टपल इन एक्स, ओके, टपल, टपल में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो एक नंबर होगा, सेकंड एलिमेंट विल बी दैट वैल्यू, ओके, जो मैंने पास करी है। तो इफ आई सिंपली प्रिंट इट एज ऑफ नाउ टपल को, तो यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस टपल, एंड यहाँ पे मेरा 0 1 2 3 आ रहा है, जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, राइट? अब मैं इस टपल को सेपरेट तो कर सकता हूँ, यू नो, लाइक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंडेक्स कॉमा नेम इक्वल्स एक्स, ठीक है, दिस इज हाउ टपल अनपैकिंग हैपेंस, ऑल राइट। एंड मैं जो है यहाँ पे ऐसे यू कैन सी 0 1 2 3 आ रहा है मेरे पास। बट इफ आई वॉन्ट कि 1 से स्टार्ट हो, नॉट फ्रॉम 0, जो काउंटिंग है, आई विल पास स्टार्ट इक्वल्स 1, ओके, देन मेरी 1 2 3 4 आ रहा है, ऑल राइट, आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट इन 3 डिफरेंट मैनर। सो दिस इज हाउ it like we use the enumerate function, and zaruri nahi 1 से, I can start from any number like 100,000, any number, okay, it will automatically increment it by 1, okay, we cannot change the increment value, ठीक है, we can only and work with the start value कि किस नंबर से स्टार्ट होगा, okay. So this is useful, enumerate and zip are useful, filter is also useful, reduce is also useful, but उसका ज़्यादा like काम नहीं है, in the OPP as much as I know, उस पर ज़्यादा लाइक आएंगे नहीं क्वेश्चंस कि उनको यूज़ करना पड़े, आप मैनुअली भी कर सकते हो, पहले आप इनको भी मैनुअली कर सकते हो, बट दीज आर जस्ट शॉर्ट हैंड्स, ऑल राइट। सो yeah, lambda functions, I'll go into that as well. Let's take a 2 minute break, okay, 9:25 हो रहे हैं, और like 9:30 तक, till then if you guys have any doubts you can speak up and ask me. At 9:30 we will continue. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है अभी तक? ऑल राइट, अभी कंटिन्यू करें फिर, या शुड वी टेक अ ब्रेक? ओके, एक थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। OPP2 के लिए हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक फील दैट यू आर प्रिपेयर्ड कि आप पास हो जाओगे? जस्ट गिव अ थम्स अप, how many of you think that you will be easily like pass OPP2? All right, so many are saying no, okay,
Okay. And how many of you were like passed in OPP1? Okay, okay. Relax guys, relax. OPP1 में कौन कौन पास हुआ था? Okay. All right. So around 60 to 40 ratio I can see by the thumbs up mainly. Okay. मॉक को देखने के बाद कुछ नहीं बोल सकते, डोंट वरी। कल हम मॉक अच्छे से करेंगे। सी अभी आपको कंसेप्ट अगर बेसिक क्लियर है ना तो आपको बाकी भी हो जाएगा, ठीक है। एंड आर यू गाइज प्रिपेयरिंग लाइक डूइंग द गिर एंड सरंदा के जो प्रैक्टिस हैकाथॉन चल रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट? जस्ट गिव अ थम्स अप इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग। ऑल राइट, डू वी हैव लाइक समवन फ्रॉम गिर? I think not. Okay, okay, fine. See, Gir and Saranda House are like they are doing a hackathon, mainly like Python OPP practice hackathon. Basically, काफी दिनों से हो रही है, 2 दिनों से, and next 2 days also we will have, जहाँ पे like they are giving some new questions to practice, okay, within the same time frame, and you have to do all the questions. That is for practice. And link, yes, let me find the link. Just a second. um, ओके, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड, आई विल चेक. Enumerate, if you can explain once more. Okay, I'll explain. Just a second. Okay, yeah, so link I'll add. Okay, just a second, let me join the meet. All right, I'm sharing the WhatsApp group link. Okay, yeah, I have shared the link of the WhatsApp group. आप लोग इसको ज्वाइन कर लो. ओके, यहाँ पे यू विल गेट द लिंक ऑफ द हैकाथॉन. 2 दिन हो गए हैं, आज और कल भी हुई थी, एंड कल और परसों भी हो गई, ठीक है। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो एंड डू द क्वेश्चंस, ओके। आई एम नॉट एबल टू फिनिश ऑन टाइम, डोंट वरी, इट जस्ट यू नीड सम प्रैक्टिस. जितनी यू विल डू द प्रैक्टिस उतना जल्दी आप कवर कर पाओगे. Okay, we have covered till the lists and till sets we have covered, not sets, till comprehensions and some built-in functions. Enumerate see, अगर मुझे एक आइट्रेबल के साथ जो भी मैं लिस्ट या टपल है, मुझे एक नंबर भी चाहिए, मुझे लाइक सीरियल नंबर वगैरह चाहिए साथ में, ओके, आई कैन यूज द एन्यूमरेट फंक्शन. बाय डिफॉल्ट इफ आई रन दिस, जो मेरे पास x है, लाइक फॉर x इन एन्यूमरेट आई एम डूइंग, राइट. So what x is doing is, x is a tuple I am having. इस tuple में सबसे पहले element I have this number, okay. The second element I have here is the that specific value, okay, जो भी उस index पे है, okay. First element जो भी specific element है, परम, करण, अर्जुन, रमेश, okay, and their respective number. अब अगर मुझे number चाहिए not from 0, I want number should be start from, let's say, 200. Okay, I'll pass in start equals 200, and then you will see मेरे पास 200 से स्टार्ट हो रहा है, 200, 201, 202, 203, एंड देन मैं इन दोनों को सेपरेट भी कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे दिस इज जस्ट नॉर्मल टपल अनपैकिंग, लिस्ट ऑफ एक्स, ओके. I'll show you. See, normally index, okay, I can do something like this.
index equals x of 0 and name equals x of 1. okay, either this, अगर मैं ऐसे करूँगा तो you will like see print idx and name, then मेरे पास ऐसे different आ रहा है, right? I'm having these two different values, or what I can do is I can simply separate them in one line, something like this. okay, this is just tuple unpacking. अगर आप लोग मेरा वो टपल वाला सेशन देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ सी, ये मेरे पास एक लाइक इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, कंबाइंड इक्वल्स enumerate of names, okay, with the start value of 100, and if I print the list of combined, then मेरे पास वही आ जाएगा, these values. okay, okay, let's say मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ. marks I have 34, 54, 23, 76. yeah, that's it. yeah, okay, so let's say मुझे names और marks को साथ चाहिए, ये number 10010, like from 101. how will I do that? अगर मुझे names, marks और ये number तीनों चीज़ें चाहिए एक पेयर में, एक टपल में, मैं कैसे करूँगा? We can zip the three. yes, right, we can zip them. so zip names, okay, and marks. मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को जिप कर रहा हूँ, उस जिप पे आई एम एन्यूमरेटिंग देम, ओके, and then I'm just converting that enumerated object into a list, and here I'm getting this value. okay, we can zip something like this. I know यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आ रहा है in a different manner, that is fine. आप लोग like you can use in various ways. compilation error, इन डैट हैकाथॉन, उसके लिए आप ग्रुप में पूछ सकते हो. ओके, कंपाइलेशन एरर इज मोस्टली कोड में कोई दिक्कत हो, नॉट मे बी नॉट इन योर कोड, इन द टेम्पलेट कोड जो उन्होंने प्रोवाइड किया. ओके, दैट यू कैन आस्क इन दैट ग्रुप जो मैंने अभी लिंक शेयर किया. ओके, आज कंटेस्ट था 5 to 8 it was. okay, it is already ended, so okay, now In zip you said that the length should be same, na? yes, length should be same. इन दोनों की लेंथ सेम थी ना, 4 4. If not same, then what you ओके, said? लेंथ सेम नहीं है, देन जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ का होगा ना वहीं तक जाएगा. ओके, so if I run this I'll get till 103, that is Arjun 23, Ramesh won't be included. okay, and if I set strict equals to true, then मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है, कि लेंथ सेम है ही नहीं, इट वोंट एग्जीक्यूट. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ वैलिडेशन विच यू आर डूइंग. आप वैलिडेट कर रहे हो कि सबकी लेंथ सेम है या नहीं. कैन यू यूज पाइथन ट्यूटर ड्यूरिंग OPPE? सी, अगर आपके सामने पाइथन ट्यूटर है इन द पोर्टल, एग्जाम पोर्टल, देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज. अगर नहीं है देन डोंट ओपन इन एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट. ओके, अगर आपको पोर्टल में जैसे अभी शो होता है वैसे है तो डैट इज completely fine, you can use it. नहीं है तो नहीं है. I don't have the Python subject, so I can't be sure कि है या नहीं. okay, now let's move on. Then the functions. all right, functions, square, not square, okay, power, nx. okay, a simple function I have defined here, power, which basically do n raised to the power x. okay, एक नॉर्मल फंक्शन है, प्रिंट पावर 2, 3, what will be the output? 8. all right, okay, a equals 3, b equals 2, a comma b, what will be the output? 9. right, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है. आई एम जस्ट पासिंग देम. ओके, We have a function called POV for this, right? yes, we have the function called POV. I'm just taking an example for like how to define user defined functions and all. आप उसको भी यूज कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, that is up to you. okay,
This is how we define a function like def and the function name, then in the parenthesis हम जो भी उसमें parameters हैं, okay, n x a b c anything जो भी parameters है वो हम उस पे डालते हैं, and then we have this all the working, okay. लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया p equals n raised to the power x, and then we have a return value. Return value is जो मैं उस function से return कर रहा हूँ, okay. So this is how it is working. Now एक छोटी सी okay, now if I run this, जो a और b है, a और b की actual value है, it is being assigned to n and x, okay, and वो n and x से compute हो रही है p की value, and वो p की value को मैं return कर रहा हूँ. What will be my output now? Will it like I will get an error, or I will get 9, or I will get none, और कोई भी output नहीं आएगा. Okay, I can write options: A error, B 9, C none, or D nothing. Okay. All right, error none, nothing. Okay, see, I will get none as output. That is not nothing, of course. None is a none type data type, okay. By default the value like the return value is none, okay. अगर मैं सिंपल ऐसे सिर्फ रिटर्न लिख रहा हूँ, या मैं रिटर्न लिख ही नहीं रहा किसी फंक्शन में, देन वो जो है फंक्शन नन को रिटर्न करता है, ओके. आपने अगर इफ यू हैव सीन सम कोड बेसिस, तो आपने कोड कुछ ऐसे भी देखे होंगे, सम एरो की एंड विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू नन, ओके. हम ऐसे रिटर्न वैल्यू डिफाइन करते हैं कि रिटर्न वैल्यू का टाइप क्या होगा मेनली, ओके. सो नन सिंपली मीन्स इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, ओके. अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो नन आ रहा है, मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा. ऑलराइट, नाउ let's say I won't pass b here. Okay, I'll pass b. I have x here is 3, okay. What will be my output? 9, none, 9. okay, ठीक है, मैं none को हैंडल कर देता हूँ. Return p, okay. Now what will be my output? 9. Are you sure? मुझे एरर नहीं आएगा कोई? All right. Error. See, error नहीं आएगा. This is like you can say beauty of Python. In Python we can like set a default value for the parameters. Okay. तो मेरा 9 आ रहा है, मतलब अगर मैं कुछ एक सेकंड पैरामीटर पास करूंगा, तो जो भी वैल्यू पास करूंगा ना, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी x को. अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ a पास कर रहा हूँ, a मेरा n पे जाके असाइन हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू 3 कंसिडर हो जाएगी, एंड नाउ द आउटपुट विल बी 27, ओके. सो दिस इज हाउ डिफॉल्ट पैरामीटर वर्क्स, ओके. yes, it will be a default argument, default parameter middle, okay. So this is like very basic thing. अभी एक बहुत छोटा सा if I do a equals 10 def change a equals 20 returning not returning, that is it, print a change a print a. okay, first of all change की रिटर्न वैल्यू क्या है मुझे ये बताओ. I'll go into that. okay, none. ठीक है, मेरे पास none आएगा, कुछ भी प्रिंट मतलब none आएगा, none will be printed. ऑलराइट, ओके. पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट वो है जब हम पास करते हैं ना फंक्शन को कॉल करते टाइम, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके. सो ए इज द आर्ग्यूमेंट, हियर ए इज द पैरामीटर, ओके. यहाँ पे जो ये फंक्शन डेफिनेशन पे जो ये चीजें होती हैं, दीज आर पैरामीटर्स, ओके. दिस इज द डिफरेंट नेमिंग है, नेम्स है, ठीक है, कुछ और नहीं है, जस्ट दैट नेम हमारे पास डिफरेंट होते हैं. ऑल राइट,
मेरी a की वैल्यू आफ्टर कॉलिंग द चेंज 20 होगी या 10 होगी? ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट, 10 और 20? a will be 20. ऑल राइट, मुझे तो 10 आ रही है। सी, फंक्शन के अंदर हम जितने भी पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, ये इसके लोकल वेरिएबल में आते हैं। देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एलईजीबी रूल। ओके, मैंने इसको बहुत डीप में करा है, कंसिडर्ड एज प्रमोशन और समथिंग, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। दिस इन दिस सेशन 12 अगर आप इसको अच्छे से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा हाउ इट इज़ वर्किंग। एलईजीबी रूल, लोकल एंड क्लोजिंग, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। ओके, इट मीन्स कि जो ए मेरा यहाँ पे डिफाइन है ना, ये मेरा ग्लोबल स्कोप पे है, मतलब मैं ए को फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इफ आई प्रिंट हेयर ए, ओके, अभी मैं सिर्फ इतना करता हूँ, मैं ये सब हटा देता हूँ, चेंज ऑफ ए। अब मेरा क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या होगा मेरा, ये बताओ। 1020. या 1020। ओके, सो हाउ इट इज वर्किंग, जो ए है मेरा, ये ए तो यहाँ पे ठीक है, ये मैं पास कर रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एन पास करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ए इक्वल्स एन कर देता हूँ। अब मेरा क्या होगा, अभी भी 1020 होगा, राइट, ठीक है। ऑल राइट, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, दैट इज द एरर, अनबाउंड लोकल एरर। इसको लेट्स जस्ट इग्नोर इट। अभी इतना सा देखते हैं, ए इक्वल्स टू एन, एंड मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अभी लेट्स से इफ आई वांट टू लाइक यूज दिस वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए इक्वल्स टू 10 को यूज करना है, ठीक है। मैं फंक्शन में कुछ और पास कर रहा हूँ, मान लो मैं 30 पास कर रहा हूँ, बट मुझे इस ए को भी यूज करना है। आई कैन डायरेक्टली यूज इट हेयर ए। ओके, अभी अगर मैं डायरेक्टली करूँगा ना, मुझे एरर आ जाएगा कि लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, मतलब कि असाइन मैं नेक्स्ट लाइन पे कर रहा हूँ, असाइन बाद में कर रहा हूँ, बट मैं यूज पहले कर रहा हूँ, राइट। यू कैन सी, है ना, मैं 27 लाइन पे इसको ए को प्रिंट कर रहा हूँ। ये ए जो है, ये इसके अंदर वाले ए को कंसिडर कर रहा है, इंडेंटेशन के अंदर वाले, ये बाहर वाले ए को कंसिडर नहीं कर रहा। ओके, दिस इज द लोकल स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ए वेरिएबल। अगर मुझे बाहर वाला ए यूज करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल ए लिखना पड़ेगा। ओके, दिस मीन्स मैं ग्लोबल वेरिएबल जो है ए, मैं उसको यूज करूंगा, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, मेरा आराम से 1030 हो जाएगा। ओके, is this clear guys? So for defining that global variable inside a function, then we have to make sure we have to write that global A. अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो, अगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा ना, मैंने प्रिंट ए करा था पहले, राइट, अगर मैं प्रिंट नहीं कर रहा तब मेरा वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये ए जो है, ये ए मेरा लोकल इस फंक्शन के अंदर बना है। दिस ए इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ए। ओके, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है, फंक्शन के अंदर है। जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म होगी, ये वेरिएबल अपने आप खत्म हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। बट इसका स्कोप पूरे पाइथन स्क्रिप्ट में है, जब तक मेरी पाइथन स्क्रिप्ट चलती रहेगी, डजेंट मैटर फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, ए की वैल्यू 10 रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। ये ग्लोबली है, ये लोकल इस पे यहाँ पे डिफाइन हुआ। अब ओके, a equals to 20, let's say like this, yeah, a equals to n, and मैं करता हूँ global a, ठीक है, print a, change 30, print a. Now what will be my output? टेन थर्टी, ठीक है, और कोई 1030 और 10 and 30. ओके, 1010 नहीं आएगा। ऑलराइट, यस, ग्लोबल है क्योंकि आई एम यूजिंग द ग्लोबल ए, ठीक है। दिस इज हाउ आई कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, तो यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। 1010 आ रहा है, जस्ट एट यूजिंग दिस ग्लोबल कीवर्ड,
हाउ कैन आई मैनिपुलेट द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मान लो ये ना, अभी आपको लग रहा हो ये व्हाट इज द यूज केस फॉर दिस। मान लो मैंने ना यहाँ पे कहीं पे एक पाई नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया 3.14, ठीक है। और मैं अपने फंक्शन में भी मैं एक पाई नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इसकी मैंने वैल्यू रख दी 3.22 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे प्रिंट पाई कर देता हूँ एंड प्रिंट पाई कर देता हूँ, और इनफैक्ट मैं ये भी पास नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरी पाई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे 3.14, राइट। 3.22 प्रिंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा पाई जो है ये लोकल यूज हो रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू यूज सम ग्लोबल वेरिएबल्स इन द फंक्शन, ओके। मुझे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करने पड़ जाते हैं हम लोगों को, कभी कभी ऐसा यूज के साथ है। तो व्हाट वी डू इज हम ग्लोबल पाई लिखते हैं एंड मेक श्योर कि आप जब भी ऐसे कर रहे हो ना, आप उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आप मतलब इस ग्लोबली इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहे हो। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर दिया चेंज, उसके बाद मैं पाई की वैल्यू देख रहा हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग सम एरिया ऑफ सर्कल और समथिंग लाइक दैट, एंड मैं देख रहा हूँ मेरा आंसर तो बहुत ही वियर्ड आ रहा है। वाई? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लोबल पाई यूज किया एंड उसके बाद मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। Now if I run this, you can see 3.22 हो गई है. So this is like use with a warning. Okay. आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज मत करो। आप नॉर्मली ऐसे कर रहे हो ना, तो आप ये लोकली एक पाई वेरिएबल बना रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यू आर लाइक चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। So this is like the LGB rule where it comes, and उसका as I said you can watch in my session 12. Okay, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है हर एक वे में, लोकल एंक्लूसिंग, ग्लोबल एंड बिल्ट इन, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, मेक श्योर कि आपको जब ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना है फंक्शन के अंदर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन हुआ है, अगर आपको उसको चेंज करना है, यूज दिस कीवर्ड। ऑलराइट, इज दिस क्लियर गाइस? Okay. Okay. Now lambda functions. See, एक मेरे पास है लाइक पावर एक्स एन रिटर्न एक्स रेज टू द पावर एन। मैं ये कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा बहुत छोटा सा फंक्शन है, यू कैन सी 2 लाइन का कोड है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लिसिटली बड़ा करूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पी, है ना। इट विल बी ऑफ 3 लाइन्स। इस 3 लाइन के कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर ऑफ एक्स कॉमा एन रिटर्न एक्स एन, ठीक है। और मैं इस कोड को थर्ड वे दैट इज यूजिंग द लैम्डा फंक्शन भी मैं लिख सकता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया पावर 2 इक्वल्स लैम्डा एक्स एन, ओके, कोलन, ठीक है। अभी रिटर्न मैंने लिखूंगा, यू कैन सी एक्स रेज टू द पावर एन, जस्ट दैट सेट, मैंने बस इतना लिखा। and if I call all of them like power of let's say 2 3 and print power 2 of 2 3, दोनों पे you will see like I'll get the same answer, okay। and doesn't matter कि मेरे नेम सेम होने चाहिए, a b भी मैं लिख सकता हूँ and a raised to the power b. Now what is the difference here? These are the parameters लैम्डा के बाद और कोलन के पहले जितने भी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, दीज आर द पैरामीटर्स। कोलन के बाद जो भी होगा ना, वो मेरी रिटर्न स्टेटमेंट होगी, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ना, सेम थिंग आई एम एडिंग हियर, ओके। स्पेस डालू नहीं डालू वो मेरे ऊपर है, ऑलराइट। सो दिस कोलन बेसिकली डिफरेंशिएट्स द पैरामीटर एंड द रिटर्न वैल्यू इन लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन का यूज क्या है? सी, कई बारी ना when you like work with some libraries, तो उस पे क्या होगा कि स्पेशली इफ़ यू हैव वर्कड विद सम GUI लाइब्रेरी एंड ऑल या कुछ भी, तो आपके ना जब भी एक बटन क्लिक करते हो, लेट्स से आई हैव लाइक वेरियस बटन, लाइक इन दिस आई हैव प्लस बटन ब्राउज़र पे, ओके। एक इवेंट कॉल होता है, ओके, एक इवेंट क्रिएट होता है, तो वो इवेंट पास होता है, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं लैम्डा के थ्रू, एंड बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, ठीक है। तो उस तब जो है लैम्डा फंक्शन यूज आता है। एंड डेटा एनालिसिस में भी
व्हेन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, तब आप लैम्डा फंक्शंस हम बहुत यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज इट अबाउट लैम्डा फंक्शंस. कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है. लैम्डा फंक्शंस को हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, विच मीन्स कि मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, लैम्डा सी कॉमा डी, सी रेस टू द पावर डी, एंड इसको ना मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ. ओके, एंड अब इसको मैं कॉल करता हूँ 2,3. ऑल राइट, this okay, yeah. So what I am doing here is, see, मैं पहले प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ. जो मैंने लैम्डा फंक्शन लिखा ना, इस लैम्डा फंक्शन को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया जिससे ये पूरा एक ही चीज़ कंसिडर हो. एंड नाउ आई एम कॉलिंग दिस. ओके, सेम थिंग आई हैव डन हेयर, जस्ट मैंने इसको पावर 2 में असाइन कर दिया था. ऑल राइट, दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, सो दिस इज व्हाट लैम्डा फंक्शंस आर. एंड हम इनको एनोनिमस फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मान लो हमें एक सेम लाइक फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ रहा है, बट वी डोंट हैव टू सेव दैट फंक्शन इन अ नेम. तो जैसे यहाँ पे मैं इसको कहीं नेम नहीं कोई असाइन कर रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड लाइक एनोनिमस फंक्शन कॉल. ओके, आपको आगे जाके इफ़ यू गो फर्दर इन पाइथन, जब आप लाइक मॉड्यूल्स वगैरह के साथ वर्क करोगे तब आपको पता चलेगा कि यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ द लैम्डा फंक्शंस. ओके, दिस इज सेम एज एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट. अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट करी है किसी ने तो आपको पता होगा. ओके, नाउ this is it. Now we have the file handling. Excuse me, Before, can you give an example of lambda function with some comprehension? okay, comprehension, yes, sure. All right, so let's say I have defined a function called q lambda x raised to the power 3. Okay, अब मुझे एक लिस्ट चाहिए of cubes of 1 to 10. What I will do is I'll call cube of I for I in range 1,11. Okay, this is same as जैसे मैं normal कर रहा था. Here you can see I'm getting the cubes. All right, and अगर मैं ऐसे करूँ like def of cube x return x raised to the power 3, दोनों same है. Okay, the line number 20 to 23 and line number 24 both are doing the same thing, just that I'm using lambda here. अगर मैं इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दूँ, मान लो मुझे क्यूब कहीं पे स्टोर नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे इसका यूज़ है. So what I will do is I will define lambda here, lambda x cube. यहाँ पे तो of course I can do directly, okay, as well like I raised to the power 3, but मैं आपको lambda का यहाँ पे भी थोड़ा करके बता रहा हूँ. Okay, Okay. now file handling. In the file handling, before going into that, मैं थोड़ा सा ये डेटा के साथ let us like play some. Okay, when we'll discuss matrix. Okay, matrix I have not covered. Matrix मैंने पहले वाले सेशंस में कवर करा हुआ है, तो मैट्रिक्स पे आई एम नॉट गोइंग. मैट्रिक्स इज जस्ट नेस्टेड लिस्ट. ओके, अगर आपको मैट्रिक्स का डीप में देखना है, यू कैन वॉच माय सेशन नंबर 10. यहाँ पे आई हैव कवर्ड लाइक एवरीथिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स, एवरीथिंग. ओके, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा कंसेप्ट और लाइक सेशन. ओके, सो सबसे पहले ये डेटा लेते हैं. ठीक है, आई हैव थ्री डिफरेंट in three different ways I have the data. So आप लोग डेटा देख पा रहे होगे, right? Can you tell me what this data is all about? Anybody? If you guys can speak up, that will be more better. Course, subject, marks. Yeah, Subjects and marks of a right, different. है ना? Okay, let's say if I want okay, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. मान लो मुझे ये इशिका का पूरा रिकॉर्ड चाहिए. हाउ कैन आई गेट डेटा? आगे 1. ओके, डेटा Close ऑफ brackets. 1, राइट. ठीक है, बहुत बेसिक सा है.
डेटा ऑफ 1 करके मेरे पास ये एक रिकॉर्ड आ गया। ऑल राइट, नाउ लेट से मुझे ये सिर्फ नेम चाहिए आरव। हाउ कैन आई गेट द नेम आरव? yes, I'll upload the session. Yeah, data 0. Okay, data 0 will give me this dictionary. All right, and उसका okay, data 00 no, see डिक्शनरी है ये मेरी, ठीक है, एंड डिक्शनरी में यू कैन यू नो कि कस्टम की वैल्यूज होते हैं, राइट? देन आई विल हैव नेम हियर, डजंट मैटर नेम में डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, सिंगल कोट्स में, इट्स अप टू मी। मेरे पास आरब आ गया। ऑल राइट, दिस इज क्लियर, बहुत बेसिक था, है ना? अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ आई वॉन्ट टू लाइक ओके, नॉट टोटल, मुझे मैक्सिमम मैथमेटिक्स मार्क्स चाहिए फ्रॉम दिस डेटा। मुझे मैक्स मैथ्स करके मैं लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। मुझे मैक्सिमम मैथमेटिक्स के मार्क्स चाहिए फ्रॉम दिस डेटा। ओके, मैं आपको एक में करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट में आपसे पूछूंगा, ठीक है। वट आई विल डू इज आई विल गो थ्रू द डेटा। मैं रिकॉर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर रिकॉर्ड इन डेटा। रिकॉर्ड जो है ये मेरी एक पूरी डिक्शनरी होगी, राइट? अब रिकॉर्ड में से मैं मैथ्स के मार्क्स निकालूंगा। हाउ? रिकॉर्ड ऑफ मैथ्स, फाइन। नाउ आई विल सिंपली कंपेयर इट। इफ मैक्स मैथ्स लाइक जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, अगर वो कम है जो मेरे अभी के मैथ्स के मार्क्स मैंने निकाले हैं, ठीक है, दिस इज अ सिंपल मैथ्स लॉजिक, देन मैं मैक्स मैथ्स में मैथ्स के मार्क्स स्टोर कर दूंगा, ठीक है। एंड इफ आई प्रिंट हियर मैक्स मैथ्स, देन मेरे पास यहाँ पे आएंगे 98, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 98। ओके, 98 यहाँ पे दिया के हैं, है ना? इज दिस क्लियर गाइस? हाउ आई एम गेटिंग द मैक्सिमम मैथमेटिक्स मार्क्स? अगर किसी को क्लियर नहीं, यू कैन आस्क, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि इसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ऑल राइट, आई वॉन्ट जिसके भी मैक्सिमम मार्क्स हैं उसको मुझे नेम चाहिए। हाउ कैन आई गेट द नेम? अब नेम मुझे आप लोग बताओ। मैं नेम एक यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, मैक्स नेम करके। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग, मुझे मैक्स नेम में दिया चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिया के 98 मार्क्स हैं। स्टोर वेरिएबल फॉर नेम टू, यू कैन यूज आई ऑल्सो, यस मैं आई भी कर सकता हूँ रिकॉर्ड की जगह, इट्स अप टू मी। मैं बस रिकॉर्ड लिख रहा हूँ कि थोड़ा बेटर नेम। ओके, हाउ कैन आई वर्क विद द नेम? ओके, नेम इक्वल्स रिकॉर्ड नेम, रिकॉर्ड, क्योंकि आई नो लाइक आप लोगों के पास ऐसे ही टाइप का डेटा है, राइट? इन द ओपीपी क्वेश्चंस में आपके पास ऐसे फॉर्म में डेटा आएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, जिससे आपको क्लियर हो जाए। नाउ अभी अगर मैं मैक्स नेम को प्रिंट करता हूँ तो अभी तो मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, टाइपो इन नेम, वेयर इज द टाइपो? आई डोंट थिंक, लाइन नंबर 42, रिकॉर्ड ऑफ नेम, नो टाइपो तो कोई नहीं है। व्हाट शुड आई डू हियर? मुझे यहाँ पे दिया चाहिए नेम में, मुझे मैक्स नेम में दिया चाहिए बिल्कुल। हाउ कैन आई स्टोर दिया इन मैक्स नेम? ओके, सी, अब देखो, मैं मैथमेटिक्स और नेम ले रहा हूँ, एम आई राइट? इतना क्लियर है सबको? यहाँ पे, Yes. हाँ। अब मैं जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, अगर ये मैथ्स के जो अभी वाले मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स से बड़े हैं, तो मैं मैक्स मैथ्स में उसको स्टोर कर रहा हूँ। सिमिलरली आई विल स्टोर द नेम एज वेल। ओके, या, एंड इफ आई रन दिस यू कैन सी मेरे पास नेम आ गया। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि print the name of the student who is having maximum mathematics marks, so this is the code। बहुत छोटा सा कोड है, राइट? कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ डीप में नहीं गए हम, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। ओके, इज दिस क्लियर नाउ टू एवरीवन? Yes. ओके, सो अब मैं एक थोड़ा सा और क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं खुद ही क्वेश्चन लिखता हूँ, print the name of student
having maximum average marks. Average marks we can compute like average marks is like marks of maths plus science plus English plus CS divided by 4. Okay, this is the average marks. अब मुझे नेम प्रिंट करना है. अब मुझे कोड आप लोग बताओ. मैं शुरू से करता हूँ, ठीक है. अब मुझे कोड बताओ आप लोग. कम ऑन, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है. रिमेंबर द स्टेप्स जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया था. ओके. ऐड डेटा. ऑल राइट. सी आई डोंट थिंक मुझे ये ऐड करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अप्रोच हो जाएगी. बहुत बेसिक अप्रोच पे जाता हूँ, ठीक है. We एक can में define a function for average first, and then we can use that yes, in a I for can loop. do that as well. Okay. Define average. In average, I'll pass the marks of mathematics, science, English, CS, ठीक है. And I'll simply return the average marks m plus s plus e CS divided by 4. Okay. इतना clear है? Yes. All right. Now max average equal 0, max name. ठीक है. सो ये मैंने दो चीज़ें डिफाइन कर दी. नाउ फॉर रिकॉर्ड और इनफैक्ट फॉर आई, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट हैंड पे जाऊँ, फॉर आई इन डेटा. अब मुझे डेटा में से सबसे पहले क्या चाहिए, लाइक व्हाट आई हैव टू डू फर्दर इन लाइन नंबर 48. I close bracket maths. ओके. ओके. And we can assign it to m या or एम और मैथ्स और एनीथिंग. सिमिलरली वी विल डू फॉर साइंस एंड अदर्स, राइट. मेरे पास इससे मार्क्स आ जाएंगे. ओके. English and then CS, IO, CS. All right. Now, next step. we can find the average using All right. Average marks equals average, and I will pass MSc CS. ठीक है? yes. Yes. Now, what will be the next step? Average is greater than max average. Okay. So average marks greater than max average. Then max average would be average marks. Average. All right. An Okay. average name will be Max name will be Name. I name. yeah, I I name. name, right. And now I just have to print max name, and I can also print the max average as well. All right. And you can see दिया कि we are getting like the highest average marks. आप देख भी सकते हो 90 की रेंज में most of the marks. Okay. Is this clear? बहुत छोटा कोड था, कुछ बड़ा नहीं था, है ना. अगर आप इनको देखो, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज, एंड उसके बाद सेम लॉजिक है जो अभी हमने अप्लाई किया था, राइट. नाउ लेट्स से एक थोड़ा सा और आगे जाते हैं. एवरेज मार्क्स हमें पता है, हमें कैसे कंप्यूट करना है. असाइन ग्रेड. ओके. एंड ग्रेड विल बी लाइक, मैं 4 ग्रेड डिफाइन. एस ग्रेड होगा अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा होंगे. इफ मार्क्स आर एवरेज मार्क्स आर ग्रेटर देन 90. और ओके, या श्योर, आई विल पेस्ट दिस डेटा. ओके, आई थिंक इसको अब नेक्स्ट पे करते हैं. लाइक वी हैव वेरियस डेटा, डिफरेंट डेटा एज वेल. तो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है. मैं नेक्स्ट पे वी विल डू. सो ये तो एक फर्स्ट वे में क्लियर हो गया. आई एम जस्ट लाइक मेकिंग यू ऑल फेमिलियर विद द डेटा. अभी एक डेटा 2 करके है, ठीक है. मैं इसका नेम भी डेटा रख देता हूँ. नाउ कैन यू टेल मी लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल.
लेट्स से मैं यहाँ पे एक ये भी लिखता हूँ सैम्पल कि रोल नंबर एंड देन नेम मैथ्स इंग्लिश साइंस एंड CS. ठीक है. ओके, what is this data about? Is this data same as the previous data? No, this is a dictionary but with a list as value. Yes, इसमें हमारे पास एक additional field, we can say additional information, that is the roll number, right? Mm-hmm. And hence all the things as well. अब यहाँ पे हमारे पास डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में, पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज थी, नाउ वी हैव द डिक्शनरी ऑफ वेरियस लिस्ट्स, राइट, हर एक रिकॉर्ड पे. नाउ लेट्स से आई वांट this list Vivan, Vivan 89 42 88 93. मैं इसको कैसे प्रिंट करूंगा? I want this as my output, this highlighted part. Roll number 3. Yeah, data of roll 3. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. आई एम जस्ट लाइक, मैं एक एक करके जा रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर होता जाए. अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगी जस्ट लाइक इंटरप्ट इन बिटवीन. ओके, नाउ लेट्स से मुझे कृष्णा ये नेम चाहिए. हाउ कैन आई गेट द नेम? Data of roll 7. Again, name. All right. Anybody else? Okay, मैं नेम करता हूँ. या इट इज 0. नो नेम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइक लिस्ट है. ठीक है, वी डोंट हैव एनी डिक्शनरी. यू कैन सी मेरे पास कृष्णा आ गया. ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं. फाइंड द टोटल मार्क्स. ओके, लेट्स से find total marks of each student and print roll number of student having maximum total marks. पहले वाले क्वेश्चन से तो इजी है, just that I am making you all familiar with different data. How can we proceed? Okay, sum. All right. मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ सम और लाइक टोटल समथिंग. ओके, क्योंकि सम हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है. इसका भी आई विल गिव यू वन वार्निंग. ओके, अभी मैं आपको बताऊँ. ओके, सो आई विल हैव लाइक मैथ्स इंग्लिश साइंस एंड CS रिटर्न MESCS. ठीक है. Now what will be my next step? For loop. All right. Anybody else? और भी कोई like I want कि see, जितना ज़्यादा आप लोग इंटरेक्ट करोगे उतना आपको ही क्लियर होगा. I know the code, I can do in 1 minute at max, so मुझे कोई दिक्कत नहीं है. The more you guys interact, that will be like more beneficial to everybody in fact. ओके, सो एक छोटा सा मैं लिख देता हूँ मैक्स टोटल करके. ठीक है, एंड मैक्स रोल नंबर भी, मैक्स रोल इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग और zeros एनीथिंग. ओके, नाउ टेल मी द नेक्स्ट स्टेप. For loop. Yes, there will be a for loop for I in data. Yes, key value in data or anything. Okay, मेरा I में क्या आएगा? रिया, like okay, this list or this whole pair or this roll number. I में मेरा क्या आएगा? Yeah, the whole key value pair. Okay, if I print the I, sorry, not whole, it will be the key only. Okay. Can we do it like this? Key for key comma value in Yes. items
data dot items. Yes, उसमें भी you can do. That is up to you. आप लोग जैसे मर्जी करो. Okay. मैं बस बहुत ही shortest way से I'm like going. Whatever you find useful, easier to you, just do that one. Okay. कोई compulsion नहीं है कि आपको एक ही वे से करना है कुछ भी. तो बस make sure कि you are doing in a right way. Okay. मैं अभी बहुत ओके की वैल्यू डेटा डॉट आइटम्स कर लेता हूँ. या नाउ आई वांट दीज मार्क्स मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड ऑल. हाउ कैन आई गेट द मार्क्स? See, first we have mathematics and English, then science and CS. So order doesn't matter. Yeah, value of 1. Similarly, others as well. English, that will be value of 2. And science, value of 3. And then 1 2 3, and then the last which is CS, value of 4. Okay, मेरे पास ये मार्क्स आ गए, सब कुछ आ गया. Now okay, now the next step would be to calculate the total marks. All right, total marks is total maths, English, science and CS. ठीक है. Okay, won't the dictionary start with 0? Total is a function as well. Yes, total is a function. Okay, so it is giving us the total. And Either can we we can pass a string value in total as well? I no. See, बहुत ही सिंपल रखते हैं. ठीक है. It is nothing it is nothing like complex. हम कुछ complex नहीं कर रहे, बहुत basics है. हम बस marks इसमें pass कर रहे हैं and we want the sum of marks. Okay, just consider कि हम numbers ही pass कर रहे हैं. बाकी you can modify it accordingly. Okay, want the dictionary start with 0. See, dictionary में we have key value pairs, so हमारी key कुछ भी हो सकती है. It is not necessary कि 0 सही हो. And this value when we are doing, क्योंकि value 0 पे we have the name, right? So this is why. And what happens when you enter key value in data dot items? All right. So in data dot items, what it will do is data dot items will give us a list of key value pairs. Okay, so it will give us something like this, a list, and in the tuple first we have the roll number, then the list, this list, let's say this Ria. Okay, and similarly comma, then one more record, and so on and so forth. हमारे पास पूरे we will get the 10 records. Okay, yeah, okay Monica. So yeah, in dictionary the key we have the like we define pairs in dictionary, the key value pairs. We don't have any custom index. Okay, and the keys we have are like in this manner, roll underscore something. And then here like we are gathering the, like we are getting the value, we are mainly extracting the marks. Okay, English, mathematics, science and computer science. Here like this is like the whole one value, and if you can see like the first value in this list is a name. Okay, so we are ignoring this value of 0. We are only considering value 1, value 2, value 3, value 4. All right, so this is like what we are doing here, value 1 2 3 4. Okay, now what should be our next step? We want to like print the roll number of the student having maximum total marks. For loop once again. Why once again? Like I don't think we need one more for loop. What basics are? What we will do is an if condition. If total marks of this student is greater than max total, I'll assign max total equals total marks. Okay, this is it. बहुत basics are. Now I want the roll number of student having maximum total marks. मैं roll number कैसे, how can I extract the roll number? Anybody?
key. Okay, yeah, we have the key as roll number, right? So max roll equals key. Okay, this is it. If I print max roll and max total, you will see we'll get the roll number 008, again the dia, because we have the same marks here. Okay, now let's say in this roll 0_008, I just want the like 001. I just want these numbers 001, 002, 010 something. How can I get this exact number? Like in max roll, I'm getting this whole number, right? Okay, max roll equals key minus 4 something. Yeah, that is fine. Slicing inside the. Yes, okay, minus 4 is giving us this, so -1, -2, -3. -3 is better, yeah. -3, and then we will get this one. And if I want the roll number in like numbers, this is a string, right? If we check the type, max roll, it is a string. I want a number. I want it to be an integer. How can I convert it into integer? Well, मैंने खुद ही कह दिया. Simple typecasting. Yeah, just typecast it. Okay, बहुत बेसिक सा था. I hope आपको समझ आ गया होगा. In the same question, what will be the approach to find the second maximum? Second maximum. First, we will find the maximum marks. We will compare that marks with the second max, like max 2 total, something like this. Okay. So yeah. Here first we are calculating the maximum marks. Then we can again like create a nested if else, or in fact an outer if else as well. Like if max total. Okay. If max total is okay, not max total. All right, so first we are getting the total marks and we are comparing the total marks with maximum marks. Okay, we can simply compare it here with the max 2 total first. Okay, uh, okay, not directly max 2 total, that would be a bad approach. First we will compare with the, if total marks is lesser than max underscore total, then we will do this. Okay, if they are lesser than this, if not, else then the max total will be the total marks, because these are the maximum marks. Okay, and this will like simply store the maximum sorry, this will store the second highest marks, you can say. First you have to compute the first maximum marks, then the second maximum marks. Okay. Okay. Yeah. All right, so this is it for this one. Okay. All right, now let's proceed further to the third one. This is something which like जो हम देख रहे थे, we need. Okay, the data is same. All right. Now can you like figure it out, like what this data is about and all? Is the data same as the earlier one? Don't go into the structure, but yes, no, not structure wise, but the data, like the information we are getting, information is same, right? Yes. We have the roll number, but yeah, this is what is, it is a dictionary of dictionaries. Okay, so let's say I want this dictionary Puja one. How can I get this? I want this dictionary, the last one, this highlighted one. Records 10. Okay, मैं records 10 लिखूंगा ना, या records in quotation marks 10. What do you guys think? Will it be quotation marks or Quotation marks? okay, quotation marks? Why not normal 10? क्योंकि यहाँ पे तो 10 नहीं है.
It's a string, not a int. Yeah, It is it's a string. string. Yes, if I normally run this, I'll get an key error because 10 is not the key. If I put it in quotation marks, then I'll get my exact value. Not only 10, it is quotation marks. You were right. Okay, so let's say I want the name Mira. How can I extract the name Mira? This Mira I want. Brackets 4 in Mm-hmm. quotation marks, Mm-hmm. and then bracket name Yeah, in quotation marks. yes. I'll get Mira. Okay. So आपको डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, राइट? द फर्स्ट थिंग इज जो भी आपके पास डेटा आ रहा है ना, वट एवर डेटा यू आर गेटिंग, गेट फेमिलियर विद द डेटा. ओके, आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू एबल टू एक्सेस सम वैल्यू, हाउ कैन यू एबल टू एक्सेस सम की वैल्यू और सम पेयर. अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना, देन आपके लिए लॉजिक बनाना और भी आसान हो जाएगा. एंड जस्ट लाइक फॉलो द स्टेप्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर ईच क्वेश्चन. मैं आप लाइक एक एक क्वेश्चन भी वी आर डूइंग, राइट? It is not like the same as the OPP question, but kind of same, क्योंकि हमारे पास डेटा इन सेम फॉर्मेट में है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम्स में. ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू फाइंड टोटल मार्क्स of each student and add append that total marks in their record. I want to do this. Like I want to find the total marks of each student, that is mathematics, science, English and CS, some of them. And I want to add that total marks in each and every record. How can we do so? No, this is not file handling. After this, we will move into file handling. Okay. अब ये करना है. Let's not create any function क्योंकि total ही हमें निकालना है. Okay. So how will I proceed? The first step is okay, just 2 minutes. Let's first clear this, then file handling के पहले we will take a break. Already 10:30 हो गए हैं. Sorry guys for that much late, but I hope you all are like learning and getting the knowledge. So like you are getting the benefit. All right, we will take a break of 5 minutes after this. Okay. So I want to compute the total marks of each student. First I will go in each record. Okay, records. What I will store? I पे मेरा पूरा रिकॉर्ड होगा या वैल्यू होगी या की होगी? But I will have पूरा रिकॉर्ड. पूरा record. Okay, The whole no, record. it Huh? will only have key. Okay, it is a dictionary. If I print it, print of I, you can see 1 2 3 4 till 10. Okay. Now no, sorry, tomorrow we will do only the questions and all. ठीक है. So उस पर I won't be able to like cover up the concepts क्योंकि file handling का थोड़ा सा important है, because we will do the questions tomorrow, but mainly concept में आपको अभी करा दूंगा. छोटा सा concept है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. We won't go into much deep. Alright, तो मेरे पास I पे ये हार है. Now I want to compute the total marks. How can I compute them? Okay, मैं थोड़ा सा यहाँ पे complexity बढ़ाता हूँ. I of what I will do is I of maths, okay, plus I of science plus I of English plus I of CS. Is this valid? Yes. All right. I मेरा क्या है? I is this or I is this? The key or the I is value? the I is the key, right? Key, तो मैं key. की के बेस पे नहीं कर सकता ना. I have to write this records of I, है ना? Okay, let me remove this one. मैं just maths के marks निकालता हूँ. If I do I of maths and run this,
you will see type error string indices must be integer, मतलब मेरा i जो है वो की है एंड मैं इसके अंदर ये इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज records of i, okay, records of i will give me this particular record and उसके अंदर I will get the marks. Alright, I'm not printing it. अगर मैं यहाँ पे print करूँगा print maths, then you will see the mathematics marks like 95, 21, 36 and the same. Okay, is this clear now what I am doing Yes. here? Is it clear to everybody? All right, अब I hope आपको नीचे वाला भी clear हो जाएगा. Record and here also record. Okay, is this clear how I'm getting the total marks? Yes. Is this for everybody? All right, now total marks आ गए. I want to append that total marks in their record. Means मुझे यहाँ पे एक और key value pair बनाना है in this data called like having the key total and with the respective total marks. How can I do so? Yes, you are right. Records I total, or in fact if I follow the exact note format, then total and simply total. Okay, after that if I print the records here, you will see okay, यहाँ पे formatted नहीं है, don't worry about the formatting and all. Okay, मैं यहाँ पे print करता हूँ, that would be much better. Print records of I. Here you can see like name, like let's check the first one, name, cs, till cs we have, right? But here you can see we have one more key called total and its respective total marks. Okay, now is this clear to you all what I am doing here? Yes. Okay, किसी को कोई doubt है? All right, so let's take a break of 2-3 minutes. At 10:32, yeah, at 10:32 we will start file handling. हाफ एन आवर का कंसेप्ट है, 11 तक ओवर हो जाएगा, उसके बाद we will end the session. I don't want कि मैं कल के लिए कुछ ऐसा skip करूँ. Let's just finish the last thing today. Okay, अगर किसी को कोई doubt है you can ask, if not you can take a break for 2-3 minutes. But by the way, how's the session so far? Like, are you able to understand the concepts जो भी अभी तक cover करें? Yes, very well. Okay. किसी को भी कोई doubt आ रहा है? You guys can ask. Okay. Hello Paramjit भैया. Yes. It's Parampreet. You can call me Param. Okay. Hi. Actually, I'm the secretary for Kanha House this year. Sorry. So Okay. Yeah. yeah. Yes. So this was a really informative session. Like, thank you so much. मेरा तो खुद का Python है, so it's really helping me a lot. Okay. So yeah. Welcome. It's Yeah, this glad to session see is you. great. Like, I'm not getting any doubts, and it's like very clear from your side. Thank you so much. Thank you. Thank you for staying till now. Okay. Are private cases, mostly the edge cases and exceptional cases is quality. Yes, in private cases, generally though, let's say if there are 5 private test cases in some question, okay, out of those 5 private test cases, 2 to 3 will be the normal test cases जो आप normal logic से handle होंगे, okay. The rest two cases will be like some exceptional cases, okay, जो आप rarely handle कर रहे होगे in the code, okay. So ऐसा होता है just to like see that the code is very well handling all the test cases or not. How to split two strings and add the splitted ends together and make a new string. Okay, हाँ ये question आपने पहले भी पूछा था, right? All right, so how to split two strings.
टू स्ट्रिंग्स को कैसे स्प्लिट करना है? लाइक कैन यू गिव एनी एग्जांपल सुरशीष? Any example if you have? Till then, if you guys have any other doubt, you can ask. I have a doubt regarding the in-term criteria for obtaining scores. Can you please Sorry, tell me? that I don't know. मैं आपको कुछ गलत बताना भी नहीं चाहता. Every term there will be like some change in the grading pattern and all. So I would recommend कि just check in the grading doc once. आपको पूरा clear हो जाएगा और ask some TA और instructor, वो आपको अच्छे से बता देंगे. Okay, they are much more familiar. Okay, Thank you. so Rashi, all right. So let's say I have this name Parampit. I want to separate it into two names, two things, the Param and Preet. आप लोग मुझे बताओ, how can I separate them? Separate the name in like two names? By Uh, slicing. okay, by Split. slicing. Yes. So let's say I'll write, okay, name here. In S1 I want Param. Split, but there is no like मैं split कैसे करूँगा? I don't have any delimiter or something. Split M we can do na M is there. Then मेरे No, पास no. M नहीं रहेगा ना. I want M. the param. Okay, normal if we do. अगर मेरे पास space है, let's go with this one. How can I separate param and preet into two different strings? Name dot split and Yes, in bracket a name dot split and in bracket I'll pass empty set. yes, print s1, print s2. Okay, this is just a normal way. I think you Swarashish, you are asking about this, right? Using the split function if I am not wrong. अगर आपको वैसे चाहिए सोरशीष का जैसे like without any space, without using the split function, then slicing is the way. Okay, slicing is the first way. बाकी आप इंडेक्स निकाल के भी उससे भी कर सकते हो. At the end you have to do the slicing only. Like I hope, yeah. Okay, so this is how you can split. So मेरे पास, okay, let's say I have a sentence here. ओके, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. दिस इज अ सेंटेंस, वी आर डूइंग पाइथन. दिस इज अ पाइथन सेशन. ऑल राइट, सो दिस इज अ सेंटेंस आई हैव. ओके, नाउ लेट्स से मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है एंड आई हैव टू like store the frequency of each word. Like this मेरा, you can see, दो बार ही आ रहा है. is भी मेरा दो बार ही आ रहा है, a भी मेरा दो बार ही आ रहा है, and python भी दो बार ही आ रहा है. So I want the frequency कि this के correspond to I इसके correspond भी to I, sentence के correspond 1I, and similarly for the rest. How will I do? First thing is, like, let's separate the sentence into words. Sentence dot split. Okay, if I print words, तो मेरे पास words की एक list आ जाएगी. Yes, then make a well, I have like covered this question in the OPP one as well, if I'm not wrong. In the OPP one revision session, I have covered this. Okay, मैं basic अभी split और उसको clear कर देता हूँ, join को. बाकी let's go not go into the question. हमें file handling भी करनी है. So if I have this words list. Okay, let me copy this words list here. Copy, and here I'll paste it. Okay, I want to combine all these words into one sentence. How can I do so? मुझे सारे वर्ड्स एक साथ एक ही स्ट्रिंग में चाहिए. empty quotes dot join. Okay, empty quotes dot join and words. All right, sentence. But it will like give me this. I want कि words हैं तो of course it should be separated by a space, right? Yeah, empty quote
will have a space as well. right? Basic thing, okay. In the join, like if we have a list or any iterable of strings, and if we want to create one string out of them, we can use the join. And जो भी हमें separator चाहिए that should separate each word, we have to like use that, and then dot join, and we have to pass that iterable. Okay, this is just the opposite of, like if I have to create words from it, I'll do sentence dot split this. Okay, you can see join say I'm joining the words, split say I'm splitting the words, rest things are same. Okay, separator, okay, that separator is different. See, in print function, if I normally print 1 2 3, you can see by default these are separated by a single space. If I pass in there is a parameter called separator. If I pass in separator as minus, okay, um, the dash which you can say, तो जो है it will be separated by this dash. Okay, if I pass in the separator as /t, so it will be separated by tab space. Okay, so this is what a separator do. All right, similarly we have end as well. Like by default, if I do this print param, so you can see both are in different lines. Agar if I set end equals star star star, okay, these three stars, then what will happen is 1 2 3, and the end will be, end is by default a new line. Okay, बैकस्लैश n जो आपने देखा होगा न्यू लाइन, बट हमने वो एंड को सेपरेट कर दिया 3 स्टार से, एंड देन 3 स्टार्स एंड देन परम इज बीइंग प्रिंटेड. ओके, this sep is for sep and is for print statement. Okay, these are the arguments for print function. All right, so now let's move on to the file handling. फाइल हैंडलिंग में हमें बहुत कुछ है वैसे तो. फाइल हैंडलिंग इज बेसिकली creating or reading the files. Okay, now here if you see we have like various files. एक मेरे पास CSV फाइल भी है मार्क्स की. Okay, I have the 30 records here. वही सेम डेटा है. Okay, now let's move on. Let's say I have a file called name.txt. Okay, so this is a Python session hosted by Parampreet Singh in collaboration with Kanha and GIR House. Alright, the 3 lines I have written in this name.txt. No, don't use pandas. It is not allowed. Okay, this is the 3 lines we have in name.txt file. But if I want to read the content, I want to print whatever is there in the file, how can I print that? First thing is I have to open that file. Okay, by open I don't mean ki okay, by open I don't mean ki I have to literally open this file in an editor. In Python we use the open function. Okay, I'll use, okay, not file, f, I should set f equals open, and there I'll pass the path of the file or the name of the file. अभी यहाँ पे सेम ही फोल्डर में है, so I'm just passing the name. Okay, and then if I do okay, content equals f dot read. Okay, and print content, it will simply read the content of this file name.txt and it will print it. All right, so यहाँ पे print कर रहा है. By default the mode is read mode. So like हमारे पास क्या है, here you can see this mode. So if I open it here, yeah, so we have various modes. Okay, read is for reading, which is the default mode. अगर हमें फाइल को रीड कर, W is writing mode, अगर हमें फाइल के अंदर कुछ लिखना है. Okay, then X is like create a new file, and then जो है X will be like it will create a new file and it will do it will help for writing. Then A is it will append the data in that file. Okay, then binary text, and these are some extra, you can ignore that one. Okay, let's just go with the basic. अगर मैं simple R लिखता हूँ, then also it will read. Okay,
because I'm reading here. Now in open we will pass the file name and the mode जिस भी में हमें फाइल के साथ वर्क करना है, then we will call the separate functions. Then जब भी हमारा काम हो जाए ना, we have to close that file f dot close करके. Okay. Now there is another way also, which is with open. It is a context manager. Okay. I'm just like calling that open function here, and then I'm reading the content here f dot read, and then I'm simply printing the content. Yeah, open as f. So f equals open name dot txt and f dot close. Okay, so ये जो first line है ना, line number 23 and this line number 25, both are doing the same thing. अब now you will say like what is the use of using this line 25? हम ये क्यों नहीं कर लेते? इसलिए because it will automatically close the file, so it will not lead to like corrupt the data of the file and all. क्योंकि जब हम normally तो हम छोटी सी फाइल से काम कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं. If we have like big amount of data, let's say file is in MBs, okay, अभी तो KB में भी KB में होगी फाइल, मैं मुश्किल से KB में it will be in like some bytes and all. So if we have data in MBs, then we need to make sure that we are flushing the content and like we are closing it appropriately. So that's why we can, if we use with this context manager, like if we open the file using with, then हमें उसको close नहीं करना पड़ता, it will automatically close it. Okay, and we can do the operations and all everything. All right, so I'm using this with as of now. So दिस इज लाइक लेट्स से मैं इसको ना अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, बाद में आई विल नीड इट. सो लेट्स से मुझे ना एक नेम डॉट टीएक्सटी में आई हैव टू राइट जस्ट माय नेम परमप्रीत सिंह. व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज w. okay, instead of f dot read, what I will do is f dot write and I will pass Parampreet Singh. Okay, and that's it, क्योंकि मेरे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है. नाउ व्हाट विल बी लाइक इन द नेम डॉट टीएक्सटी, क्या नेम डॉट टीएक्सटी में ऐसे आएगा परमप्रीत सिंह, या फिर नेम डॉट टीएक्सटी में सिर्फ परमप्रीत सिंह आएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? Only Parampreet Singh. ओके, पुराना डेटा नहीं रहेगा? उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा. yes, Starting w में. will override the data. Okay, so if I run this, you can see this code is executed. Now if I open name.txt, you can see यहाँ पे सिर्फ परमप्रीत सिंह है. all right, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड आई विल सेव इट. नाउ आई वांट कि इसके अंदर एक न्यू लाइन ऐड हो जाए, या कहीं भी लेट्स से न्यू लाइन ही अभी फिलहाल के लिए न्यू लाइन ऐड हो जाए एंड वहाँ पे परमप्रीत सिंह लिखा आ जाए, एक लाइन नंबर 4 में परमप्रीत सिंह लिखा आ जाए. हाउ कैन आई डू सो? okay, so there is a mode called append mode. a लिखते हैं हम. okay, for that a will simply open that file and अगर हम उसके अंदर कुछ भी राइट कर रहे हैं ना, तो पुराने डेटा को हटा नहीं रहा. okay, it will keep that data. okay, now if I run this, now you can see यहाँ पे परमप्रीत सिंह लिखा आ गया. okay, if I open it side by side as well, आपको like थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. I have, you can see line number 4 is empty. If I run this code, you can see यहाँ पे परमप्रीत सिंह लिखा आ रहा है. okay, in that file. This is how file handling works. It is not any kind of magic and all. okay, it is code. so आप इसको magic वगैरह मत समझना या कुछ भी like that. so this is where real application of coding comes in. okay, so then what we have is, see, there are various functions f dot read, like read lines, write lines, and some other modes as well. मैं वो सारे नहीं cover कर रहा because these are a lot. What you can do is you can simply watch my session 16 and session 17. इसमें I have covered everything in detail about both CSV and the normal text file. okay, CSV का I'll cover it a little bit क्योंकि CSV में we have various ways. okay, so we have this
नो आई एम नॉट श्योर, CSV भी आ सकता है, सो आई एम कवरिंग बोथ ऑफ देम. ओके, आई कांट बी श्योर कि एक ही आए, सो इट्स बेटर कि हम दोनों ही कवर कर लें. सो वी हैव दिस marks डॉट CSV, राइट. अभी लेट्स से marks डॉट CSV एंड आई विल ओपन इट इन. ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा मोड, तो मेरा क्या होगा, फाइल में राइट होगा, रीड होगा या Read. अपेंड होगा? Read. यस, Read. इट विल बी रीड. सो कंटेंट इक्वल्स f डॉट रीड प्रिंट f. ओके, अब मुझे बताओ. ओके, नॉट f, मेरा कंटेंट में क्या आएगा, लिस्ट आएगी या स्ट्रिंग आएगी? String. Yes, as read will only read as a like string. If I print the type of this, type of content, so here you can see it is a string. Okay, now let's say मुझे जो है, okay, generally what we do is like there is a function called read lines, right? What read lines will do is it will read the lines, एक एक line, and हर एक एक line को as a string consider करता है, and it will give us a list of strings. Okay, so first line will be this, second line will be this, and so on and so forth. If I now run this, you can see it is a class list, and here I have all the lines. So first line in this, and यहाँ पे आप देख सकते हो \n भी आ रहा है. Okay, because that represents a new line. So ये जो \n है ना, वो इसका आ रहा है. Okay, now see. Okay, so this is the I have a data. question here. Yes. In order to skip the heading part, we Mhm. can use read line Yes, first, yes, right? yes, yes. Okay, so I can, what I will do is I'll simply do f dot read line. मैं इसको क्या करता हूँ, एक ना header नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ. Okay, so that we can have the data in like we can have the column names. All right, मैं यहाँ पे column names भी print कर दूंगा. That is the header. Okay, if I run this, now you can see मेरी list में ना first record आ रहा है. It is not the column names, and जो मेरा column names है वो मेरे यहाँ पे store हो गए हैं in the header. All right, f dot read line will simply read one line. Read lines will अच्छा, read all the lines. और Yes, जो f dot read line है वो read line से पहले ही लिखना पड़ेगा, right? yes, yes. क्योंकि read line के बाद ना, मतलब यहाँ पे cursor होता है. Okay, which we handle it. So by default the cursor is at starting. जैसे मैंने रीड लाइन कर दिया ना, तो मेरा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. ओके, सो फर्स्ट लाइन विल बी स्किप्ड. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, इट इज एन इमेजिनरी कर्सर, एंड हम इसके साथ और भी खेल सकते हैं. मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है. हाउ कैन वी like add the data in certain index or certain value. Okay, and everything in this session number 16 I have covered everything, so you can watch that for the detail. Now let's say Read line और read lines कोई पैरामीटर भी लेते हैं? रीड लाइन कोई पैरामीटर नहीं लेता. लाइक इफ आई इवन हियर, ओके, size here. Okay, so read line is taking some size, and read lines is generally take some parameter. If I do 2 here, okay, so it will read 2 lines only. Okay, this, okay, it is reading only this line, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन जो है ऑलरेडी इससे कवर हो गई यूजिंग द रीड लाइन. ओके, so if I comment it out, this one also, then you will see okay, sizes, I'm doing something wrong, I guess. Okay, this is something, no, doing different, in different way. I've not read line, yeah. If I print it here, I think, okay, मैं थोड़ा सा confused हो गया, ignore that. Write lines is sorry, read takes some parameter. Read takes f dot read. If I do f dot read, it will take some size. So size is like how many number of data which I have to read. Like अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो नेम इज ऑफ लाइक 4 लेंथ. तो अगर मैं f dot read 4 करूँगा, so it will only store the name. Okay, so read takes that, and same for read line as well. So that is how it works. Now see, let's say
I have all this data here. मेरे पास header पे सारे header आ रहा है and I have like this data. अब मुझे सारे records के name print करने हैं. How can I get the name? मेरे पास एक name की list है. Not even have, don't consider the list. मुझे सिर्फ names चाहिए. How can I get the names? और I in f dot readline के बाद names निकालना. Okay. Or if I write for line in content, I can do so, right? Yes. For Yes. line in content, उसके बाद line dot zero, print Okay. line dot line close bracket 0. Okay, just hold on. So read line basically read one line at a time. Okay, मैंने read line, अभी मेरा cursor ना by default सबसे starting पे होता है. If I call f dot read line, okay, not s, मैं read line call कर रहा हूँ तो ये first line को read कर देगा. Okay, then मेरा cursor जो है second पे आ जाएगा. If I call again f dot read line, then ये मेरा second line को call read कर देगा. And similarly third, fourth and so on. And read line is basically calling the read line function जब तक मेरी पूरी फाइल रीड नहीं हो जाती. Okay, now I want to print the name. So अब बताओ how can I print the name like Arav, Ishika and all. यहाँ पे थोड़ी सी complexity आती है. We'll split by comma. Okay, let's say line dot split comma. All right, now And grab the zero S0. next. yes, so print s of 0, right? And if I comment this out, if I run this, you can see all the names are being printed. Okay, is this clear, guys? How I'm it not is? sure why did we do the split comma thing. Okay, so this one line is this whole record. Okay, so this is Yes. a string, and in string you can see we have the name and then we have the comma, then we have marks and all. Oh, okay. Okay, हमें सिर्फ name चाहिए. Okay, so in the marks if you see we have the CS marks. मान लो मुझे CS marks चाहिए. How can I get the CS marks? Computer science marks. Last वाले marks मेरे computer science Instead में. of 0, we'll put 4. 4 or -1 both works, right? Yes. So if I do this one, you can see मेरे पास ये जो है marks आ रहे हैं, but you can see मेरे पास यहाँ पे एक extra space भी आ रही है, extra line. Can you tell me why? Is this a bug or something? Backslash n. No, it's a slash n. Yes, /n. And मैं उसको कैसे handle कर सकता हूँ? But why didn't the that came for the names? Dot r से. क्योंकि name जो है मेरा यहीं तक है. ठीक है? Okay. Oh, Let okay. me एंड में वो Mhm. एंड यूज करके Okay, not end. All right. See, R से. so name is this. Okay. This is a whole line which I have, and line dot split I am doing comma, then it is having this list Manav 21, 27, 25, 21 and this. Okay, so this line dot split is giving me this value. All right, so 0 करके I can get the name and -1 by -1 I can get the CS marks. अब मुझे backslash n नहीं चाहिए. How can I remove that backslash n? Dot r से. Dot r strip or dot strip both works, right? अब मेरे पास names आ गए. See, sorry, marks आ गए, right? Yeah, dot strip से I can do this. Now let's say मुझे maximum CS marks चाहिए. I am increasing the complexity of this. Okay, मुझे maximum marks चाहिए. चलो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. Let's say I want the sum of all the marks. I want the total marks like math, science, English, CS. How can I get them? I can do something like this. S of 1 maths के लिए,
राइट। इंग्लिश के लिए s(2) एंड साइंस के लिए s(3) एंड CS के लिए s(4), राइट। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आप लोग बताओ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। Math plus English Should we convert them? Should we typecast them into integer as well? yes, that's what I want the answer. हमें पहले इसको इंटीजर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दीज आर इन स्ट्रिंग्स। अगर मैं इसको नॉर्मली करता हूँ, टोटल इक्वल्स मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस CS, एंड इफ आई प्रिंट दिस टोटल, तो मेरा टोटल आप देखोगे बहुत वियर्ड आ रहा है। दिस इज आई एम गेटिंग, ये तो नहीं है ना मार्क्स। लाइक टोटल करके मैक्सिमम 3 डिजिट्स पे आएंगे, दिस इज लाइक 6 डिजिट नंबर आई एम गेटिंग, because we have to convert it into integer. Okay, अभी एक छोटा सा कैच है। Now tell me, is this code valid? Anybody? Okay, is this code valid or not? Yes or no? Just इतना सा बताओ। we didn't do our split. Yes, we have to strip that as well. Okay, क्योंकि CS में मेरा ये था 21, एंड इसको अगर मैं \n को करने जाऊंगा ना स्ट्रिप, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। If I run this, okay, all right, it is doing it, then no worries, it is fine, but it should be like suggested to strip it. int जो है by default अपने आप कर रहा है उसको। okay, if I run this now, you can see I'm like getting the total जो 3 digits में, that is like that is in the valid format. okay, so this is how I can get total marks. अभी आपने देखा like हमें line dot split करना पड़ रहा है and all the things and all. okay, for the CSV file. अभी let's like do it in another way, that is using CSV module, and this is perfectly like completely valid. आप इसको you can do this in the OPPE, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, दिस इज वैलिड एंड दिस इज रिकमेंडेड। अगर आपके पास CSV फाइल के साथ कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, can use CSV module. okay, you can use this is like more recommended. and अब हम इस पे कैसे करेंगे? with open marks.csv, by default read होता है right as f. now CSV dot reader, and in the reader I will pass the file which I have opened. okay, and if I do reader dot okay, yeah, I think that is pretty much it. reader and yes, okay, reader। इसके अलावा ना अभी if I normally run this, let me comment this out. okay, if I run this, you can see मेरे पास एक आ रहा है CSV reader something object. okay, तो मेरे पास जो है इस पे सारा डेटा आ गया kind of. okay, if I want to print all the data, you will see for I in reader I can print I, and if I run this, you will see मेरे पास डेटा कितना फॉर्मेटेड वे में आया है राइट। मेरे पास लिस्ट ऑफ लाइक हर एक रिकॉर्ड एक लिस्ट में आया है। फर्स्ट रिकॉर्ड इज इन द लिस्ट, सेकंड इज इन द सेकंड लिस्ट, एंड थर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, this is like how you can read a CSV file using CSV module. जो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता तो मुझे और भी लाइक लाइन डॉट स्प्लिट यू कैन सी मुझे यहाँ करना पड़ता है, एंड ऑल द अदर थिंग्स। ऑल राइट, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ, प्रिंट एस, इफ आई कमेंट दिस आउट, इफ आई रन दिस वन, तो यू कैन सी अभी मेरे पास जो है ये डेटा रीड हो रहा है, एंड हियर यू कैन सी लाइक \n भी आ रहा है ना। मुझे \n को भी यहाँ से हैंडल करना पड़ेगा। यस, यू कैन यूज, इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड। अब मैं इसकी जगह अगर मैं ये कोड करता हूँ, दिस कोड, ओके, एंड इफ आई रन दिस, तो यू कैन सी ये अपने आप \n को भी हैंडल कर रहा है, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट कोमा को भी हैंडल कर रहा है।
मतलब like we have various kinds of data files like CSV, TSV में we have the data in tab separated, like instead of comma we have the tab as a date separator. Okay, so what we can do is we can pass the separator in delimiter parameter. Okay, so delimiter is the separator. Okay, so you can see ये डेटा अपने आप मेरा जो है ये अच्छे से रीड कर पा रहा है एंड आई एम गेटिंग द डेटा इन दिस मैनर एंड इससे जो है आप काफ़ी अच्छे वे से कर सकते हो रीड. ओके, नाउ देर इज़ अ डिक्ट रीडर एज वेल. मैं उस पर नहीं जाऊँगा. डिक्ट रीडर, डिक्ट राइटर, लाइक हम डिक्शनरी के वे में भी कर सकते हैं. ओके, अभी लेट्स एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये वाला अगर किसी को कोई डाउट है यू गाइस कैन आस्क. ओके, आई थिंक ये आपको बहुत इजी भी लगा होगा. छोटा सा कोड है. ओके, कुछ बड़ा नहीं है. आप अच्छे से देखना. अगर आपको बहुत डीप में देखना, अच्छे से क्लियर करना कंसेप्ट, वॉच माई सेशन 17 CSV फाइल IO. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ CSV फाइल्स. ओके, एंड क्वेश्चंस भी करे हैं मैंने कुछ. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, या यस. सो नाउ ओके, मेरे पास ये डेटा आ रहा है राइट. अब मुझे जो है ओके, मेरे पास ये डेटा डॉट py फाइल थी, है ना. ओके, ऑल राइट, ठीक है, ऐसे ही करते हैं. सो डिक्ट राइटर का भी मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, डिक्ट रीडर का. ओके, उससे आपको काफ़ी एक मतलब एक एज मिल जाएगा. लाइक डिक्ट रीडर CSV डॉट dict reader, what this do is it basically takes the like the column names as well. Okay, जो भी हमारा f है उसके साथ ही column names भी लेता है. एंड उससे पहले हम लाइक कॉलम नेम्स ऐसे लाइक वी कांट एक्सट्रैक्ट. सो लेट्स से यू नो द कॉलम नेम्स. सो ये हमारे कॉलम नेम्स है. मैं इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ. ओके, एंड कॉलम्स समथिंग लाइक दिस. ओके, मैं यहाँ पे कॉलम्स पास कर रहा हूँ. दैट इज़ द फील्ड नेम्स और कॉलम्स एक ही बात है. ओके, नाउ if I run this for I in dict reader print I, you can see मेरे पास डेटा ऐसे आ रहा है. name Arav and all the things. name Arav, name Ishika, math 62, science 33, English 45, CS 27. ओके, ये क्लियर है सबको? दिस वन डिक्ट रीडर वाला, इज दिस क्लियर गाइस? ओके, अभी ना यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज़ करते हैं हम. ये आप देख रहे होगे कि फर्स्ट लाइन मेरे पास ये हेडर वाली भी आ रही है. ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए. हाउ कैन वी हैंडल इट लाइक डायरेक्टली? तो ऐसा कोई वे नहीं है. तो व्हाट आई कैन डू इज रीडर and or in fact like either I can like skip it or either I can We cannot use read lines. no Read line no with no no the CS code uh, CSV. okay, CSV मॉड्यूल के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आप वैसे चाहते हो तो आप वैसे यू कैन लाइक समथिंग लाइक दिस, हेडर इक्वल्स f डॉट रीड लाइन. बट वैसे भी जो है ओके, इफ आई रन दिस, वेल दिस इज समथिंग न्यू टू मी. सो इवन आई एम नॉट श्योर कि लाइक विल इट वर्क्स और नॉट, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे किया नहीं. सो लेट्स सी लाइक f डॉट रीड लाइन डॉट strip.split and split with the comma header. Yeah, okay, yeah, so this is working. Okay, so f dot readline dot strip dot split, basically what I am doing is I am getting the header here. अगर मैं यहाँ पे header को print करता हूँ, you can see like this is the header. Okay, name, math, science, English, CS. Okay, मैं ऐसे करके मेरे पास ये हेडर आ गया, जो मेरे पास हेडर है, एंड मैंने हेडर को पास किया.
तो मेरे पास नाउ यू कैन सी लाइक डेटा मेरे पास इस वे में आ रहा है कि मेरे पास डिक्शनरीज आ रही। नाउ कैन यू फेमिलियर दिस डेटा, इसके साथ हमने वर्क भी किया अभी लाइक ऐसे वे के डेटा के साथ इन दिस वन, राइट, नेम आरव एंड ऑल, है ना, हमने करा ना सेम डेटा के साथ वर्क। बट यहाँ पे लाइक इफ़ यू सी जो मेरे मार्क्स हैं वो स्ट्रिंग में आ रहे हैं, मुझे वो नंबर्स में चाहिए। आई वांट मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो जो मुझे ऐसे फॉर्मेट में डेटा दे। ओके, तो हम यहाँ तक तो अचीव कर गए हैं कि हम रीड कर पा रहे हैं एक एक डिक्शनरी के बेस पे। बट आई वांट कि लाइक वी वांट कि ये जो नंबर्स हैं नंबर्स में ही चाहिए। हाउ कैन वी डू सो? ओके, सी print I. What is the I here? I is this record, am I right? Yes. Yes, I is that particular record. Okay, what I can do is I can like simply store that data. Okay, before storing that data मैं क्या करूँगा, I के जो मैथ्स के मार्क्स हैं, ओके, उनको मैं इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। ऑल राइट, ठीक है। सेम आई विल डू फॉर साइंस, इंग्लिश एंड अदर्स, like science and here English and here CS। ये क्लियर है सबको? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है मेरा आई एक रिकॉर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट अपेंड आई, एंड इसके बाद इफ आई प्रिंट डेटा एंड रन दिस, now you will see like this is my list of dictionary, like name Arav, mathematics 25, science 23, English 25 and all same यही वाला आ रहा है। ओके, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, इट इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लाइक आप देख सकते हो लिस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड हर एक डिक्शनरी के बाद कॉमा आ रहा है। ओके, मेरे पास सेम डेटा आ गया। ऑल राइट, सो यही था। वेल डिक्ट राइटर भी है, राइट करने का भी है, मैं बस आपको रीड का बता रहा हूँ। राइट करने का अभी लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इट्स 11 ऑलरेडी। आप एक बार ये CSV वाली देख लेना सेशन एंड दिस टेक्स्ट फाइल सेशन, आपको पूरा फाइल हैंडलिंग 100% आपका कवर हो जाएगा इफ़ यू इवन वॉच इट इन 1.5x, क्योंकि आपके बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे आई होप आफ्टर दिस हाफ एन आवर लाइक ऑफ फाइल हैंडलिंग। ओके, सो इतना आपको क्लियर है कि हाउ टू रीड अ CSV फाइल एंड हाउ टू रीड अ टेक्स्ट फाइल। बाकी सबको क्लियर है? ऑल राइट, किसी को कोई डाउट? Okay, that is great, Mujender. That is great. Well, this is like an achievement for me as well कि आप लोग इतनी देर तक रहे हो and you are feeling confident. Welcome guys. So yes, I think that is all about the session. Well, and like as I said, I'm recording this session and I will upload the recording of this session in my YouTube channel. You can subscribe to it. Okay, so this is my YouTube channel. You guys can subscribe to it and keep the notifications on, and like I will upload the recording and थोड़ा बहुत टाइम लगेगा 1.5 आवर बिकॉज 3 आवर्स की हो गई है ऑलमोस्ट। 1 बजे के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट। ओके, इस प्लेलिस्ट में आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ द पाइथन कोर्स। ओके, to clear your concepts. Thank you guys for staying in this session. And yeah, one more thing, just stay for one more minute. Tomorrow we will do the OPP mock questions and some new questions as well. Okay, so जिसको किसी भी क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, डाउट वगैरह है, मैं आपको टाइमिंग्स में बताता हूँ, डाउट है तो आप जो है मुझे वो क्वेश्चन विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड जो आपका आउटपुट आ रहा है एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और जो टेम्पलेट कोड दिया है, लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन में, वो सारे इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पेस्ट करके मुझे DM कर दो, ठीक है, एंड बोल दो कि
that just write कि cover this in tomorrow session. So I will cover it in tomorrow session. कल का जो सेशन है सेम मीट लिंक है जो आज की लिंक थी, कल 12 बजे होगा सेशन, दोपहर को 12 बजे. ओके, एट 12 noon we will do OPP to practice questions, some new questions, some more questions. Okay, we will do the practice and everything. No, sorry, that is not possible. But yes, 12 p.m. को कल होगा and I will record that one as well. So yes, let's meet in tomorrow session and I hope आप लोगों के 90% तो concepts clear हो गए होंगे, if not 100%, 90% तो आपको clear हो गए होंगे. So that's it guys, thank you for staying till now, let's meet tomorrow.